Okay. Well, standard. Sit in the front, please. Occupy the front benches. People at the back, that last three benches, please come and sit forward. Hey, don't sit there. Don't sit in that corner. I won't be able to see you in that corner. Sit here. You also, brown shirt, come and sit over here. Blue shirt, you also, come and sit here in this row. No, not that bench. Green shirt and plaid shirt. Hello? Green shirt, plaid shirt, over here. Come and sit over here. You guys in the front. इतना एडजस्ट करके बैठने की जरूरत नहीं है सर, सामने आके बैठ जाइए। है यहाँ पे अच्छा फैन है मेरी सर पे। Don't sit there. I already told you. फ्लैट शर्ट आगे आके बैठ जाइए, यहाँ पर आके बैठ जाइए। मुझे बताइए, when we had done climatology the last time, you were obviously not present, but when we had done climatology the last time, had we completed temperature? टेम्परेचर फिनिश कर लिया था एंड देन उससे हमने ह्यूमिडिटी कर लिया था, राइट? वी हैड डन दिस पार्ट and we had discussed the questions related to it. Okay, the next thing that we are going to see, the third factor that really affects the weather is going to be pressure. Okay, atmospheric pressure को study करेंगे and then साथ ही साथ we are going to look at the vertical and horizontal variation of pressure. फिर उसके बाद हम सारे planetary winds वगैरह discuss करेंगे, pressure belts, planetary winds and all. We'll discuss all that sort of thing. And then उसके बाद we'll study local seasonal winds. उसके बाद we have to study weather systems like cyclones and anticyclones. ठीक है? That's the gist of the chapter. And we are going to do this today. Okay, all right, so here we start off. We say atmospheric pressure क्या होता है? We say atmospheric pressure is the weight of the air column above our head. Okay, अब उसको calculate करने का, is there anybody who doesn't understand Hindi? नहीं, कोई भी नहीं। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप मीन सी लेवल से शुरू मेजर करना शुरू कर दो ऑल द वे टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओके, यू मेजर इट ऑल द वे टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ यूनिट एरिया. ओके, दैट इज हाउ यू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जितनी भी हवा उस यूनिट एरिया में उस कॉलम में मिल जाएगी, उसका प्रेशर हमारे मीन सी लेवल पे जितना पड़ेगा उसको हम वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो उसके अलग अलग यूनिट्स आर bar, millibar, pascal, kilopascal, and psi, pounds per square inch. Okay, this you've already covered, na? We've already done this. So at sea level, up one atmosphere, and you remember this table, because ये NCERT की book में भी छप के आता है. So clearly, this is an important table. At sea level, one atmospheric pressure will equal 1013.2 MB, or 1.013 bars, or 101325 pascal, or 760 mm of Hg, or 34 feet of water, or 14.7 psi. And this is a proper question, so please remember ये कैसे interrelate करता है. Okay, इस table को please by heart कर लीजिएगा. ठीक है? Now next we look at the vertical and horizontal variation of pressure. You know कि clearly pressure vary करेगा. Okay, you know कि नीचे की तरफ atmosphere में clearly थोड़ा high density होता है, and जैसे जैसे आप atmosphere में जमीन से ऊपर चले जाओ, surface से जितना ऊपर चले जाओगे altitude में, clearly वो density जो होगी air की वो कम कम होती जाती है. क्यों? क्योंकि gravity सबसे best करीब वर्क करता है, राइट, सरफेस से, एंड इट इज द ग्रेविटी दैट होल्ड्स ऑन एंड कीप्स होल्डिंग ऑन टू द एटमॉस्फेयर. तो जितना दूर आप सरफेस से चले जाओगे, ग्रेविटी का इफेक्ट उतना कम होगा, एंड वो
वो एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो इतनी छुपती जाएगी, ओके, that much lesser it will be able to hold it. So clearly the air in the closer to the surface of the earth is clearly denser as compared to the air far away from the surface of the earth, okay. तो उसकी वजह से आपको ये पता है कि नीचे ऑब्वियसली हाई प्रेशर रीजन है, ऊपर की तरफ लो प्रेशर रीजन है, ओके। अगर हम कहते हैं कि नीचे की तरफ हाई प्रेशर रीजन है, ऊपर की तरफ लो प्रेशर रीजन है, so you are essentially saying if this is the high pressure region and over here somewhere above in the altitude you have a low pressure region, तो विंड ने कैसे फ्लो करना चाहिए, अपवर्ड्स, है ना। विंड कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन, ओके। तो आइडियली द विंड शुड फ्लो लाइक दिस। डू यू एवर फील एन अपड्राफ्ट? आपको ऐसा कभी लगता है कि नीचे से ऊपर हवा जा रही है एंड आप उसमें तैर रहे हो, समथिंग लाइक, यू डोंट फील दैट, राइट? You clearly don't feel an updraft. The reason being कि ऊपर से उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है with the gravitational pressure, okay? वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस अपड्राफ्ट को, ये जो वर्टिकल ग्रेडियंट है प्रेशर का, उसको ये ग्रेविटी न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड वर्टिकल ग्रेडियंट छोटा मोटा नहीं है, इट इज 1 MB per 10 meters, मीनिंग ऑलमोस्ट 100 MB per kilometer, okay? 100 MB per kilometer इज अ वेरी वेरी लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट। उसमें डेफिनेटली बहुत ऊपर अपड्राफ्ट होना चाहिए, बट नाउ यू क्लियरली नो कि वो ग्रेविटी बहुत अच्छे से काम करता है एंड वो उस अपड्राफ्ट को, मतलब इस वर्टिकल ग्रेडियंट को ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज कर देगा, ओके, ठीक है। सो क्लियरली यू डू नॉट फील एनी वर्टिकल विंड्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर ज्यादा भी हुआ तो भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है दैट इज द हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, कि सरफेस पे किसी एक जगह पे कहीं हाई प्रेशर रीजन बन जाता है, कहीं लो प्रेशर रीजन बन जाता है, एंड विंड टेंड्स टू फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन टू द लो प्रेशर रीजन टू बैलेंस इट आउट, ओके, दैट्स द जनरल फंडा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, बिकॉज दैट विल डिक्टेट कि सरफेस विंड्स किस तरफ बहेंगे, कैसे फ्लो करेंगे, कितनी तेजी से फ्लो करेंगे, ये सब कुछ डिक्टेट होता है इस हॉरिजॉन्टल वेरिएशन से, ओके। So like we said, you see there is a high pressure region, okay? You see there is a high pressure region and there's a low pressure region, obviously. So wind will ideally flow from the high pressure region to the low pressure region, okay? तो चलो डायरेक्शन तो तय हो गया कि वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, okay? वेलोसिटी क्या तय करता है कि कितना ग्रेडियंट है, कितना डिफरेंस है बिटवीन द प्रेशर्स, वो डिफरेंस डिटरमिन करेगा कि कितनी वेलोसिटी से ये विंड फ्लो करेगा। ऑब्वियसली जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना तेजी से वो विंड फ्लो करेगा, है ना। ये तो नॉर्मल है कि द ग्रेटर द ग्रेडियंट, ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, the faster the wind, okay, the more उतना ही ज्यादा स्पीड होगा विंड का। so it is always the what do you say, it is the gradient or the amount of the gradient, जितना gradient होगा ना वो डिटरमिन करता है कि विंड का स्पीड कितना होगा, ओके, हाउ फास्ट द विंड विल फ्लो। तो उसके लिए आपको टेक्निकली देखने के लिए एक चीज मिलती है व्हिच इज कॉल्ड एज आइसोबार्स, ओके। व्हाट डू यू कॉल आइसोबार्स? जैसे आइसोथर्म्स होते हैं वैसे आइसोबार्स होते हैं। यू टोल्ड मी ऑलरेडी द अदर डे दैट आइसोबार्स आर इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, ओके। जितनी भी जगहों का इक्वल प्रेशर होता है उसको ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी उसको कहेंगे आइसोबार, ओके। नाउ ये जो आइसोबार्स होते हैं, तो अगर हम कहें कि यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ पर लो प्रेशर रीजन है, तो विंड वेरी कैसे करता है ये आपको आइसोबार से पता चलता है, ओके। सो सपोज द आइसोबार्स हियर क्लियरली दे आर वाइडली स्पेस्ड, ओके। क्लियरली यू कैन सी ना द आइसोबार्स हियर आर क्लियरली वाइडली स्पेस्ड, ओके, दूर दूर प्लेस किया गया है। तो क्लियरली यहाँ पे ग्रेडियंट कैसा होगा, ग्रेडियंट लो होगा। प्रेशर आइसोबार ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि क्लियर आइसोबार का स्पेसिंग क्या डिफाइन करता है कि प्रेशर कितनी तेजी से या कितना धीमे से चेंज हो रहा है ओवर डिस्टेंस, ओके। ओवर दिस डिस्टेंस वो प्रेशर कितना तेजी से या कितना धीरे से हौले से चेंज हो रहा है, ओके, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिटरमिन। सो अगर ये वाइड स्पेसिंग होगा आइसोबार्स का तो क्लियरली यहाँ का और यहाँ के प्रेशर में बहुत डिफरेंस नहीं है, द प्रेशर इज चेंजिंग वेरी स्लोली, ओके, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन यही अगर हम बहुत ज्यादा आइसोबार्स डाल दे बीच में, अगर वो आइसोबार्स क्लियरली जरा पास में स्पेस्ड होंगे, इफ दे आर नॉट स्पेस्ड सो वाइडली, इफ दे आर क्लोजली स्पेस्ड, तो इसका मतलब वो ग्रेडियंट ज्यादा है क्लियरली, ओके। वो प्रेशर बहुत फास्ट एंड रैपिडली चेंज हो रहा है ओवर सच अ स्मॉल डिस्टेंस, एंड अगर इतना ज्यादा ग्रेडियंट होगा तो ऑब्वियसली विंड का स्पीड भी बहुत ज्यादा होगा, ओके। यू गॉट टू रिमेंबर कि जब आप यूजुअली नॉर्मली हम कहते वक्त बताते कि प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है या कम है, ओके। जब आपको फिगर्स में दिखाया जाता है, डायग्राम्स बनाते हैं विंड के, प्रेशर के, तो क्लियरली आपको आइसोबार्स का स्पेसिंग दिखाते हैं। तो आइसोबार्स का स्पेसिंग अगर करीब होगा, पास होगा, तो क्लियरली विंड स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस ज्यादा है, ग्रेडियंट समझते हैं ना, ग्रेडियंट मीनिंग डिफरेंस। तो प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली विंड फास्ट फ्लो करेगा। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, अगर वाटर के लेवल्स बहुत ऊपर नीचे होंगे तो पानी फास्ट बहेगा या स्लो बहेगा? ज्यादा डिफरेंस होगा तो फास्ट बहेगा, राइट। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना क्विक मूवमेंट होगा, क्योंकि उतना जल्दी उसको न्यूट्रलाइज करना है, बैलेंस आउट कर देना है। सो वही चीज, यही लॉजिक आप यहाँ पर प्रेशर में भी अप्लाई कीजिए। जितना
दूर या जितना बड़ा ग्रेडियंट होगा, जितना स्टीप द ग्रेडियंट, टेक्निकल वर्ड शुड बी स्टीप, ओके। सो जितना स्टीप होगा ग्रेडियंट उतना फास्ट एयर फ्लो करेगा, ओके। एंड जितना वाइडली स्पेस्ड होंगे आइसोबार्स, उसका मतलब वो ग्रेडियंट उतना छोटा है एंड वो विंड वेलोसिटी उतनी कम होगी, ओके। इज दिस क्लियर? डायरेक्शन क्या डिसाइड करता है कि हाई प्रेशर रीजन का है और लो प्रेशर रीजन का है? डायरेक्शन ऑफ द विंड इज डिसाइडेड ऑन दैट बेसिस एंड देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, बट क्लियरली आपका जो वेलोसिटी होता है वो इन चीजों से डिसाइड होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, ओके। दैट इज द बेसिक थिंग दैट डिसाइड्स what velocity the wind will flow. All right, are we good here? I am going to assume that you've understood everything until you actually raise hands and say कि आपको नहीं समझा। क्या नहीं समझा? ओ, वो वहां से बंद करना पड़ेगा आपको, जो भी है वो मेरी तरफ से नहीं आ रहा है। क्या करके? ओ, तो वो आप, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर देती हूँ, मैं नीचे से जाके माउस नहीं लेके आ रही हूँ। अगर आप लोगों को जाना है तो आप बिंदास जाकर लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। या फिर आप वहां से कीबोर्ड से नहीं उसको कर सकते क्या? क्लोज नहीं कर सकते? एस्केप वगैरह कीजिए ना उसको। एंटर बोलिए। नहीं, नथिंग वर्क्स। या, ओके जी, ठीक है। Here we are discussing, now we are discussing the various factors that affect the wind velocity and direction, okay. We already decided कि wind का direction is decided by where the high and low pressure regions are and वैसे wind flow करेगा, and the velocity will be dependent on, normally you can see कि जितना बड़ा gradient उतना ज्यादा wind का velocity, okay, that we have already settled on. Now we are looking at the various factors that will influence the wind velocity and direction, okay. We are looking at four major factors, ये जो pink squares में है ना, we are looking at those, okay, pink blocks में। Four important factors. One is the Coriolis force, second is the frictional force, then the pressure gradient force, and the gravitational force. Okay, gravitational force आसान है, Coriolis force you are probably looking at for at the first time, and frictional and pressure gradient force we've already discussed. Okay, so देखते हैं, we'll begin with the pressure gradient force because वो सबसे basic है जिसकी वजह से wind flow करेगा। जब तक pressure का difference नहीं होगा, there is no reason for the wind to flow, right? There is no reason for the wind to move from one place to another unless there is an actual pressure difference. So it is the pressure gradient that decides that the wind is going to flow in a certain direction. And the same thing, that the rate of change of pressure over distance is going to decide the speed of the wind. Okay, तो जितना steep pressure gradient उतना fast wind flow करेगा, जितना कम pressure gradient उतना slowly wind flow करेगा. Okay, this is what the pressure gradient force is. The second and most important thing over here is the Coriolis force. Ideally, technically, उसको Coriolis force नहीं बुलाना चाहिए. It is just an effect. Okay, आपको बस एक effect मिल रहा है, उसको force नहीं बुलाना चाहिए. लेकिन अपने एग्जाम्स में भी उसको फोर्स बुला लेते, तो आप बुला लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये अपना अर्थ है एंड दिस इज द इक्वेटर, ओके। इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, रोटेशन का। नाउ वी ऑल नो कि अर्थ जो होता है वो 360 डिग्री का पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है विद इन 24 आवर्स, अग्रीड, ठीक है। बट हमको ये भी पता है कि अर्थ बीच में, सेंटर में थोड़ा बल्की है एंड ऊपर की तरफ थोड़ा फ्लैटिश होते जाता है, अग्रीड, ठीक है। इसका मतलब ये अलग अलग लैटिट्यूड्स जो है वो अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वही डिस्टेंस और वही टाइम के लिए वो अलग अलग स्पीड से चलेंगे, ओके। सबसे फास्ट कौन सा लैटिट्यूड चलेगा? इक्वेटर, है ना। इट विल बी बिकॉज वो सबसे बल्की रीजन में जाता है, सबसे बीच में वो ऐसा, इट इज बल्कियर ना, इट इज अ लिटिल swollen in the middle, okay। तो क्लियरली उससे उसका जो लीनियर स्पीड होगा वो बाकी लैटिट्यूड से तो फास्ट होना चाहिए, अग्री, हाँ। You understand the difference between linear speed and angular speed ना? Angular speed सारे पॉइंट्स का एक ही होगा क्योंकि वो उतने ही देर में वो रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन लीनियर स्पीड अलग अलग होगा, राइट। यू आर सेइंग कि हर लैटिट्यूड का लीनियर स्पीड विल बी डिफरेंट क्योंकि उसका जो बल्ज है या उसका जो कर्व है वो डिफरेंट होगा, तो उसको जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इन 24 आवर्स दैट विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, इक्वेटर विल हैव टू रन द फास्टेस्ट क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है विद इन 24 आवर्स, बट से 30 डिग्रीज लैटिट्यूड और 60 डिग्रीज लैटिट्यूड उसको इतना डिस्टेंस नहीं कवर करना है, तो उन दोनों का स्पीड रिलेटिवली कम होगा एज अपोज टू द इक्वेटर, ओके। कि इक्वेटर के लैटिट्यूड वाला जो स्पीड होगा वो क्लियरली सबसे हाई होगा, 30 डिग्रीज का उससे कम होगा, 60 डिग्रीज का उससे भी कम होगा, एंड 90 डिग्रीज पोल्स पे जब आप आते हो तो ऑलमोस्ट 0 डिग्रीज, जीरो का स्पीड होता है, ऑलमोस्ट जीरो, इट इज 0.00008 किलोमीटर्स पर आवर और समथिंग लाइक दैट।
बट वी आर गोइंग टू से इट इज ऑलमोस्ट जीरो, ओके, क्योंकि उसको ज्यादा घूमने, एक छोटा सा पॉइंट है, इतना सा पॉइंट घूमने के लिए उसको 24 घंटे मिलते हैं, कितना स्पीड से घूमेगा वो, अग्रीड, ठीक है। सो वी आर सीइंग क्लियरली लैटिट्यूड्स के स्पीड का डिफरेंसेस, ओके। नाउ वी आर कंसिडरिंग अ मूवमेंट across the latitudes, okay, हम across the latitudes movement consider करें, we are saying से इक्वेटर से लेके 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज अक्रॉस द लैटिट्यूड्स मूवमेंट कवर करते हैं, ओके। नाउ यू नो क्लियरली कि ये बहुत फास्ट स्पीड पे है, यू नो ये थोड़ा रिलेटिवली कम स्पीड पे है, ओके। ऊपर के लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स जो है वो क्लियरली थोड़ा रिलेटिवली कम स्पीड पे है। सो यू नो कि अगर से यू बिगिन एट अ पॉइंट ए, ओके, एंड यू थिंक यू आर प्लानिंग टू गो स्ट्रेट, योर इंटेंडेड मोशन इज क्लियरली स्ट्रेट, ओके। सो यू से आइडियली आपने ये बी पॉइंट पे आके पहुंचना चाहिए, ओके, आइडियली यू शुड रीच दिस पॉइंट, ओके। बट इन रियलिटी ये लैटिट्यूड जो है वो तो लैग कर रहा है ना, वो तो इससे थोड़ा कम चल रहा है, राइट, इट इज गोइंग एट अ लेसर स्पीड देन द इक्वेटर। तो जो आपका एक्चुअल मोशन होता है वो यहाँ पर नहीं आता है, वो पॉइंट B1 पे मतलब यहाँ पर आके रुक जाता है, ओके। तो ये जो डिफ्लेक्शन जैसा मिल जाता है, बिकॉज दिस इज स्टिल कैचिंग अप ना, ये ऊपर का लैटिट्यूड इज स्टिल कैचिंग अप, वो तो धीरे धीरे लैग कर रहा है ना, आराम से चल रहा है वो। तो जो यहाँ पहुंचना चाहिए था वो एक्चुअली यहाँ पहुंच जाता है आपका स्पीड, ओके, जो भी आपका मोशन है वो इस तरफ पहुंच जाएगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन मिलता है आपको, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टू द राइट होता है एंड लेफ्ट, सदर्न हेमिस्फीयर में टू द लेफ्ट होगा वो डिफ्लेक्शन, ओके, वो डिफ्लेक्शन हमेशा टू द लेफ्ट चला जाएगा। तो यू आर सेइंग एसेंशियली कुछ ऐसा होगा वो, कहाँ ढूंढूं मैं उसको, this is how the direction should, this is how the direction of deflection will be, okay। ideally अगर ये सीधा जाने के बजाय you were considering कि इसने actually सीधा जाना चाहिए था, okay, लेकिन ये सीधा नहीं जाता है, ये थोड़ा राइट को डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। अगर ऊपर से यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा था तो भी वो थोड़ा राइट को ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। डिफ्लेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द राइट, ओके। एंड यही चीज अगर आप अभी सदर्न हेमिस्फीयर में कंसिडर करो, इसको स्ट्रेट जाना था, दिस वाज इंटेंडिंग टू गो स्ट्रेट, ओके, वो थोड़ा सा लेफ्ट को कर्व हो जाता है इंस्टेड, ओके। यही चीज अगर कुछ कोई चीज नीचे की तरफ आ रही होगी तो वो ऑब्वियसली थोड़ा लेफ्ट को कर्व हो जाएगी, ओके। तो deflection due to the Coriolis effect in the southern hemisphere is always towards the left, and deflection due to the Coriolis effect in the northern hemisphere is always towards the right, okay। and ये क्यों होता है, क्योंकि latitudes अलग-अलग speed से चलते हैं, okay। the latitudes will move at different speeds than the equator or lesser speeds than the equator, and clearly जब आपको different speed के latitudes में move करना होता है, across move करना होता है, तो clearly आपको ये deflection मिल जाता है। ये this is how the Coriolis effect works, okay। so we can't necessarily call it a force, but we should necessarily call it a, अच्छा आपको समझा नहीं ये इस तरफ क्यों जा रहा है, अरे क्योंकि इसका मोशन ऐसा है, आप उल्टा पीछे पीछे की तरफ जा रहे हो, यू वॉकिंग बैकवर्ड्स नाउ, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, ये ना, दिस विल बी योर लेफ्ट, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में टू द लेफ्ट जाएगा। एंड अगर आप इधर ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो वो हमेशा राइट को डिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज अंडरस्टूड ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन आपको यू आर अंडरस्टैंडिंग ना कि उल्टे एंड सीधे मोशंस कैसे हैं एंड उसकी वजह से राइट एंड लेफ्ट को डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, ओके। आपको ये इसका ना एग्जाम में कभी भी डायग्राम नहीं आता है, यू विल, आई हैव नेवर एवर सीन यूपीएससी आस्क यू, गिव you are a different case, obviously you will definitely get diagrams and you will get figures to look at, but and clearly this is clear enough to you, right। लेकिन you people never get a diagram based on this, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है इसके ऊपर। यूजुअली आपको जो मिलता है इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट कि कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है या नहीं होता है, ओके, इतना इतना छोटा सा स्टेटमेंट आता है आपके लिए, ऑलराइट, ठीक है, सो यू रिमेंबर दैट। ठीक है, सो वी आर सेइंग कि ये जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है वो विंड्स को राइट को डिफ्लेक्ट कराएगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट को इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। वंस अगेन जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा विंड का उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ओके। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे आप, जितना ज्यादा डिफरेंस इन द स्पीड इज ऑल्सो, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, विंड का खुद का स्पीड जितना ज्यादा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा, ओके। प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली विंड का स्पीड ज्यादा होगा,
विंड का स्पीड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा. ओके, एंड अगर आपको इफ यू आर सेइंग यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 0 डिग्रीज लैटिट्यूड, इक्वेटर से लेके 10 डिग्रीज तक ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो कम आएगा ना, स्पीड्स में डिफरेंस कम है तो डिफ्लेक्शन कम होगा. लेकिन यही अगर आप कहो कि मैं इक्वेटर से अभी 50 डिग्रीज नॉर्थ तक जा रहे हैं, ओके, तो क्लियरली वो डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है बिकॉज स्पीड्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है. इक्वेटर का स्पीड बहुत ज्यादा है एज अपोज टू दैट 40 या 50 डिग्रीज नॉर्थ को जो स्पीड होगा उस लैटिट्यूड का वो बहुत कम हो जाएगा. ओके, तो जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा स्पीड में उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा. विंड स्पीड में भी जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा. ओके, गॉट टू रिमेंबर इट दिस वे. एंड क्लियरली आपको ये अभी यार इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर, अगर आप कह रहे हो कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा स्पीड है, तो अगर आप इक्वेटर के आसपास ही कैलकुलेट करो, इक्वेटर से मे बी 5 डिग्रीज या 10 डिग्रीज नॉर्थ वगैरह का डिस्टेंस ले लो, तो वो बहुत नेग्लिजिबल आएगा ना कोरियोलिस इफेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा स्पीड्स में, लैटिट्यूड्स में, तो क्लियरली आपको कोरियोलिस इफेक्ट इतना मिलेगा नहीं. So the thing to remember is that Coriolis effect is always zero at the equator and maximum at the poles. Okay, you will always find the Coriolis effect to be zero at the equator and maximum at the poles. And Coriolis effect क्या करा रहा है? Deflection करा रहा है, turning करा रहा है. तो ये टर्निंग की एबिलिटी अगर नहीं होगी इक्वेटर पे, तो क्लियरली यहाँ पे साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स नहीं बन सकते, है ना? ये क्लियर है? तो साइक्लोन एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, हवा टर्न करती है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट, हवा टर्न कर जाएगी एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर फॉर साइक्लोन्स. ओके, सो वी आर सीइंग कि अगर वो टर्निंग का एबिलिटी होगा ही नहीं इक्वेटर पे, इक्वेटर के आसपास के रीजन में अगर वो टर्न करने का एबिलिटी नहीं है, कोरियोलिस इफेक्ट काम ही नहीं करता है, जीरो है, तो वो साइक्लोन्स या एंटी साइक्लोन्स कैसे बनेंगे? राइट, अग्री? सो वी आर सेइंग इक्वेटर पे आपको साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स नहीं मिलते हैं, आपको सारे साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स जो है वो यूजुअली 10 डिग्रीज से बाहर मिल जाते हैं. ओके, 10 डिग्रीज नॉर्थ के अबव एंड 10 डिग्रीज साउथ के नीचे, दैट इज वेयर यू आर लुकिंग फॉर देम. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, अभी जो नेक्स्ट फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ गुड थिंग. वी आर सेइंग कि सॉरी, आई वांटेड टू टेल यू कि हम जब कोरियोलिस फोर्स के लिए ना, जब आप यू नो जैसे ट्रांसएटलांटिक फ्लाइट्स वगैरह लेते हो, दूर दूर के फ्लाइट्स लेते हो एंड सो ऑन सो फोर्थ, स्पेशली जब आप लैटिट्यूड्स के अक्रॉस ट्रैवल करते हो, तो वो कोरियोलिस इफेक्ट काम में आता है ना, ये वो डिफ्लेक्शन हमेशा थोड़ा राइट को या लेफ्ट को हो जाता है. तो क्लियरली शिप्स के लिए भी जब आप क्रूज का ट्रेजेक्टरी डिसाइड करते हो, तो उसके लिए भी यूजुअली आप हमेशा एक सेल्फ करेक्शन मोड में चला ही जाता है वो शिप, या वो जो सिस्टम होता है, नेविगेशन सिस्टम जो होता है, इट इज इक्विप्ड विद द सेल्फ करेक्शन मोड, क्योंकि आपको बार बार वो करेक्शन करना पड़ता है. The moment you change direction, वो correction immediately हो जाता है. Okay, तो most navigation systems, whether you are considering airplanes or ships or something like that, will have a built-in, course correction. कि वो course correct कर ही लेते हैं because of this Coriolis effect. That I needed to tell you. Okay, now we move on to the gravitational force. Okay, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली नीचे की तरफ एक्ट करेगा, है ना? ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, हमेशा डाउनवर्ड्स, बिकॉज ऑफ विच यू डिस्पाइट अ वेरी लार्ज वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट यू डोंट फील एन अपड्राफ्ट. आपको ऐसा ऊपर से नीचे हवा जाती हुई, नीचे से ऊपर हवा जाती हुई नहीं नजर आती या फील नहीं होती. ओके, एंड द लास्ट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, वो यू आर सेइंग कि ये रही आपकी जमीन. ओके, दिस इज योर सरफेस. ओके, अब यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, पेड़ वेड़ मिलेंगे, you will find buildings and so on so forth. Agree? हाँ, ये सब कुछ मिल जाएगा clearly. 1 to 3 kilometers तक आपको ये obstructions मिलते रहते हैं. Okay? Now what happens is because of this वो wind obstruct हो जाता है. Wind का path clear नहीं है obviously, तो wind keeps getting obstructed. तो ये frictional force effect में आ जाता है. Okay? The frictional force will remain in effect only up to 1 to 3 kilometers from the surface of the earth. Okay? उसके ऊपर तो नहीं काम करेगा because एक हिमालय से हमारे 8 किलोमीटर तक जाने वाली उसके कितने कम माउंटेन्स है जो ऐसे 4-5 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं. राइट, सो क्लियरली यू आर लुकिंग एट अ वाइड स्पेस. तो ऊपर जाके बहुत ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है, नीचे यूजुअली 1 to 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑब्स्ट्रक्शन होता है. तो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो उस स्पेस में काम करेगा, उतने विंडो में काम करेगा, 1 to 3 kilometers from the surface of the earth. Okay, and remember the frictional force will always be minimal at the sea surface. Okay, आप जमीन से रेजिस्टेंस मिल जाएगा ना विंड को, जमीन रेजिस्ट करेगा ना विंड को, लेकिन सी वेव्स करते हैं क्या? नहीं, सी वेव्स तो विंड के साथ घूमते थे, है ना? तो वो घूमते फिरते रहते हैं विद द विंड. वो विंड जहां लेके जाएगा वहां सी वेव्स चले जाते हैं. राइट, अग्री? सो वी आर क्लियरली सेइंग कि इट विल ऑलवेज बी मिनिमल एट द सी सरफेस. ओके, with this pressure gradient force ना people, there is something that you need to know. pressure gradient force and Coriolis force जो होता है ना, वो हमेशा perpendicular होता है. Okay, ideally if I say this is a high pressure region, okay, this is a high pressure region, say I'll call it 1010 MB. Okay,
इतने एमबी का हाई प्रेशर रीजन, और यहाँ पर लो प्रेशर रीजन है, वी कॉल दैट 1000 MB का, तो 10 MB का डिफरेंस ऐसे हम बोल रहे हैं, ओके, अक्रॉस द स्पेस। सो वी आर सेइंग आइडियली विंड कैसे ब्लो करना चाहिए फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, ओके। तो ये जो आइसोबार्स है, तो उसको परपेंडिकुलर ब्लो करना चाहिए विंड ने। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो विंड किस तरफ खींचा जाएगा? टू द राइट, है ना, विंड विल ऑलवेज बी पुल्ड अलोंग द राइट, टुवर्ड्स द राइट, ओके। एंड देन इन दोनों का मिला जुला जो ऐसा डायरेक्शन मिलता है, दैट शुड आइडियली बी द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द विंड, है ना। ये कोरियोलिस फोर्स है, दिस इज द कोरियोलिस इफेक्ट दैट इज वर्किंग, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जिसकी वजह से द विंड इज बीइंग पुल्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ पुल करेगा? राइट को पुल करेगा, हाँ। तो इसका इन दोनों, यार आपने यू डन दिस इन फिजिक्स राइट, आपने ऐसे वो कॉस थीटा वगैरह वाली चीजें नहीं किया आपने? किया है ना, यू डन दिस ना, रिजल्टेंट स्पीड वगैरह नहीं कैलकुलेट किया है? अगर दो फोर्सेस इस तरफ और इस तरफ काम करेंगे तो रिजल्टेंट स्पीड बीच में आएगा, डिपेंडिंग ऑन विच फोर्स इज वर्किंग इन विच डायरेक्शन। किया है ना, यू डन दिस फिजिक्स एंड मैथ ना बिफोर, ये वेक्टर्स वेक्टर्स में भी कर लिया है ना आपने, हाँ गुड है, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि अगर कोरियोलिस फोर्स राइट में पुल कर रहा है एंड प्रेशर ग्रेडियंट, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पुलिंग द विंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन में पुल करेगा? ऑब्वियसली राइट की तरफ पुल करेगा, ओके, दिस इज कोरियोलिस, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ विंड क्या हो जाएगा? समवेयर ओवर हियर, है ना, दैट विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द विंड, ओके। सो वी आर सेइंग कि आइडियली कोरियोलिस एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए, ओके, दे शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। नाउ यू लुक एट द थेरोटिकल विंड, ओके। अब ये चार फैक्टर्स समझ में आ गए, कोरियोलिस, फ्रिक्शनल, प्रेशर ग्रेडियंट एंड ग्रेविटेशनल, ओके, दीज आर द फोर फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस द विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। अब इनको समझ में लेकर वी आर गोइंग टू ट्राई टू कंसिडर अ वेरी थेरोटिकल विंड, गर्ल्स, we are going to try to look at a theoretical wind, okay। theoretical इसलिए ऐसा नहीं कि ये लाइफ में, रियल लाइफ में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है, लेकिन इसके लिए वो मैथ्स बहुत सही होना चाहिए आपका, ओके। मतलब वो बिल्कुल सही से बैठ जाना चाहिए इक्वेशन। We are saying it's a theoretical wind in the upper atmosphere. If you are talking about the upper atmosphere, तो clearly you are eliminating the frictional force now. अब आप इस force को completely eliminate कर रहे हो। Agree? You are eliminating this force completely, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स की अभी बात नहीं कर रही हो, बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर, क्लियरली 1 किलोमीटर अबव, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्लियरली नेग्लिजिबल होगा, ओके। अब आप कहते हो कि इट इज फ्री ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस फ्रिक्शन। अब इसमें क्या होता है, जब आइसोबार स्ट्रेट हो जाते हैं, यू आर सेइंग जब आइसोबार स्ट्रेट होंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगा वो इक्वल हो जाता है टू कोरियोलिस फोर्स, ओके। यू आर टॉकिंग ऑफ अ वेरी स्पेशल कंडीशन under which the pressure gradient force is going to be equal to the Coriolis force, okay। नॉर्मली आपने क्या कहा था, अंडर नॉर्मल कंडीशंस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। हियर यू आर सेइंग कि वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, ओके, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अब उस केस में विंड किस डायरेक्शन में ब्लो करेगा? इस डायरेक्शन, ओके, पैरेलल टू द आइसोबार्स, ठीक है, दैट इज हाउ द विंड विल ब्लो। दिस इज एन आइडियल कंडीशन, ये ऐसा होता नहीं है अक्सर, अनलेस यू एलिमिनेट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस। वेट अ मिनट, आई हैव अ पिक्चर फॉर इट, तो आप ना भूलेंगे नहीं कभी उसको। सी ऐसे, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, वी से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज अ हाई प्रेशर रीजन, ये 1008 MB है, ये 1000 MB है, ओके। सो वी आर सेइंग कि क्लियरली ये हाई प्रेशर रीजन है, दिस इज द हाई प्रेशर रीजन, दिस इज द लो प्रेशर रीजन, ओके। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए? ऐसे, ओके। वी आर सेइंग कि इस केस में क्लियरली कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वल एंड बैलेंस्ड है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, ओके। तो उसकी वजह से विंड का डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसे, एंड ये कैसा है? दिस इज पैरेलल टू द आइसोबार्स, ओके। once again the question will be posed simply as कि ये कौन सा विंड होता है जिसमें विंड फ्लोज पैरेलल टू द आइसोबार्स, एंड योर ऑब्वियस आंसर इज गोइंग टू बी जियोस्ट्रोफिक विंड, ओके। जियोस्ट्रोफिक विंड का एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल आपको पता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग फॉर, तो जेट स्ट्रीम्स वगैरह जो होते हैं ना, वो जियोस्ट्रोफिक विंड्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर बनते हैं, some 9 to 16 kilometers from the surface of the earth। तो you are talking of tropopause, you are looking at proper tropopause and places, तो वहां पे बनते हैं यूजुअली। एंड उसका हमारे लिए प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस ये है कि जब हम हमारे प्लेन्स वगैरह लेके या जेट्स वगैरह लेके जाते हैं ना, तो ये विंड्स जो होते हैं ये डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे, ओके। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, एंड वो जेट स्ट्रीम अगर आपके पीछे से आ रही होगी तो क्लियरली आपको एड करेगी, है ना, इट विल हेल्प यू, एंड वो फ्यूल बचाएगा, टाइम बचाएगा क्लियरली आपका, बिकॉज अभी आपको पीछे से पुश मिल रहा है, ओके। बट इफ यू ट्राई टू पुट अ प्लेन एंड हैव द प्लेन्स ट्रेजेक्टरी moving in a direction opposite to that of a jet stream, then you are going to suffer losses because you are going to have to work against the wind. तो clearly अभी fuel के losses होंगे, oh, you're here,
feed losses होंगे, so you're looking at those things. Okay, so clearly this is the practical application for it, that if your jet streams and geostrophic winds जो होते हैं, the practical application for it is going to be when you are traveling in the upper atmosphere, planes and stuff like that. Okay, sometimes they even influence weather systems. That is a whole different funda, but this is what we are looking at. Most airlines will try to track their routes to places and track their flight routes in such a way so that you are always in the path of the jet streams and being pushed forward in that direction. Okay, that is always like that. If you have to come in a direction which is opposite to the jet streams, you can either choose to go above the jet streams or below the jet streams. You can travel that way. So then you're not working against the wind and you're not burning extra fuel for that. Okay, okay, makes sense? Practical enough? Yeah. All right. Okay. So that would be the geostrophic wind. Okay. All right. Now you move to the general atmospheric circulation. When we say general atmospheric circulation, we are trying to see how the winds move on the surface. Okay, so here we'll try to observe what are pressure belts, like the equatorial low pressure belt, the subtropical high pressure belt, then the polar low pressure belts, the subpolar low pressure belts and the polar high pressure belts. Okay, so you're looking at these pressure belts, alternately high and low pressure belts that are formed on the surface of the earth. Okay, you will also look for the winds, surface winds that blow between these winds. Okay, for example, if you're looking at the equatorial low pressure belt and the subtropical high, in दोनों के बीच में between 30 and between 0 degrees, you will usually see the northeast and the southeast trade winds blowing. Okay, if you go between the 30 and 60 degrees north, between this region, if you're looking between this region, between this and this region, that is clearly the westerlies. Okay, you're looking at the westerlies blowing over here. So we are going to take a look at all the pressure belts, the way in which they are formed, and the different surface winds that blow over here, and the convection cells that are formed alongside it. Okay, that is the atmospheric circulation. That is what we are looking at. Pay good attention. After that is done, we can take a break for 5 minutes. Here we are. We are looking at planetary winds now. The reason why they are called as planetary winds is because they are very specific and very certain for that particular time period and that space. Okay, for that particular area, over that particular area, and in that direction, only that wind will blow. Okay, such winds are called as prevailing winds or planetary winds. Okay, can I call Loo as a planetary wind? The one that flows in Punjab and UP. Can I call that as a planetary wind? No, it is an occasional wind. वो seasonal wind होता है, local wind है. Okay, there is a difference. These are planetary winds. These will blow all across the year for a specific time and over a specific region only. You're saying that these planetary winds will only blow between certain places. Okay, so for example, you're talking of if you're talking about the trade winds, then they'll clearly blow from the subtropical high pressure belt to the NITC or SITC जो भी होगा वो. Okay, we are looking at that. So very specific region, very specific area, very specific time and a very specific direction. Okay, so such winds will be called as planetary winds and they blow all over the year. Okay, so these winds are called as planetary winds. Examples will be trade winds, westerlies, polar easterlies, so on and so forth. Okay, now we said we'll have pressure belts discussed, right? We said pressure belts are formed and everything. We'll try to understand how these pressure belts are formed. Is pressure related to temperature? Yeah. Is pressure dependent on temperature? Yeah, it is, right? They are interrelated. Clearly, pressure and temperature are interrelated. अगर low pressure region होगा तो clearly you are looking at high temperatures. अगर low temperature होगा तो you're looking at a high pressure region. Okay, ठीक है? So now we say that the way this happens is, first of all, there is a latitudinal variation of atmospheric heating. Okay, you know clearly that at the equator, the insolation will be the maximum, right? The insolation received is maximum. So clearly the heating of the earth will also be maximum at the equator. Okay, if clearly you're getting a high amount of temperature, what happens to the pressure in that region? The pressure will go low. Okay, so there is a low pressure region formed over there. Okay, so you're saying at the equator, where you clearly, this is the equator. Okay, you're saying at the equator, clearly you receive a large amount of insolation. So the temperature increases. If the temperature increases, obviously the pressure drops. Okay, so you say high temperature, low pressure region. Okay, equator is a high temperature, low pressure region here, clearly. Okay, so over here, the belt, low pressure belt is formed. Okay, similarly, what happens to these places wherever there is wherever the temperature is a little colder, or the places are a little colder, you can expect high pressure belts to be formed. Yeah, so this is the latitudinal variation of insolation.
the various latitudes will heat up or cool down differently. And because of that, accordingly, pressure belts will emerge over there. Okay, pressure belts will be developed. If it's a high pressure region, if it's a high temperature region, then clearly low pressure belts will be formed. If it's a low temperature region, then clearly high pressure belts will be formed. Okay, this is clear, right? Now what happens is that once these pressure belts are formed, you have to understand. Remember, we had discussed the apparent movement of the sun. We had said that the sun always goes within a calendar year. The sun goes from the equator to the Tropic of Cancer, then from the Tropic of Cancer back to the equator, and from the equator back to the Tropic of Capricorn. Okay, this is a motion that the sun finishes within one calendar year. Agree? Okay. So you remember ना these solstices and ये सब याद है ना आपको? ये करवाया था हमने, हाँ? ये सब करवाया था. Equinoxes and solstices. You had not done this before. I haven't taught you this before. No worries, no worries. But you know the general idea, right? That this is the apparent motion of the sun. That the sun will move from the equator towards the Tropic of Cancer, back to the equator, and then from there to the Tropic of Capricorn. Okay, this is the apparent motion of the sun. The reason we are calling it as apparent motion is because it is not the sun that is changing its position. It is because the Earth revolves and rotates, and because of that, you can feel that the sun's rays, the insolation, is available at different places at different times of the year. Okay, that is what we are saying. Now, because of this apparent movement of the sun, clearly the sun is not giving insolation to one single place all throughout the year. Okay, so when the sun's rays shift, when the sun's insolation shifts, clearly these pressure belts, these high and low pressure belts, also shift with the sun. Okay, if the low pressure belt in the middle starts shifting, the entire set of belts will move up and down along with the sun. Okay, so this is called as shifting of pressure belts. So once the sun also moves, the belts, first of all, you need latitudinal variation in temperature. Okay, and clearly because of that, the pressure belts will emerge. Once the pressure belts are developed, you have to understand that there is an apparent movement of the sun, because of which all the belts can shift northward or all the belts can shift southward. Okay, once this happens, there is also another factor to consider, that the oceans and continents are distributed differently. Okay, this is our map. This is our world map. Okay, this Brazil's shoulder, the shoulder of the Brazil is the equator. Okay, this is where your equator is at. All right. Okay, you can clearly see that in the northern hemisphere there is an abundance of land and comparatively less water. Okay, can you say the same about the southern hemisphere? No, clearly in the southern hemisphere there is an abundance of water and clearly less amount of land. Agree? Okay, and you have to realize the reason why we discuss the distribution of oceans and continents is land has this property of heating up very quickly and cooling down also very quickly. Okay, so if it heats up very quickly, then in summers it is going to form low pressure regions. Okay, if it cools down very quickly, then where you find a lot of land, in winters it is going to form very high pressure regions also. Okay, so because of the land and water, because of the distribution of land and water, temperatures are localized differently in both the hemispheres. Okay, so clearly in the northern hemisphere you're going to have a lot of problem of continentality. Continentality meaning a place which is you four people at the back of the class, please stand up. You four at the back of the class, someone sit here. Do you hear me? Sit here. Yeah, stop. आके बैठ जाइए सर, सामने आके बैठ जाइए. क्या नहीं होता है? वही ठीक है. नहीं आइए, मैं इनवाइट कर रही हूँ, आइए बैठिए. Sir, listen to me. This is not a suggestion. So we were discussing because of the distribution of land and water, clearly you will get localized high and low pressure regions. Okay, because clearly wherever you find abundance of land, you will see that there is a low pressure region formed in the winters, and sorry, high pressure region formed in the winters and low pressure region formed in the summers. Okay, where you find a lot of land. So we are looking at that funda now. All right. And you also have to understand that there is rotation of the earth. Clearly, earth कौन सी direction में rotate करता है sir?
ऐसे या ऐसे, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? अगर वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता तो जापान हमसे पहले सनराइज कैसे ले लेता? बोलिए, हमारे यहाँ सनराइज कैसे होता है? यहाँ पर सनराइज होगा पहले, जापान वापान ये रशिया वगैरह यहाँ पे पहले सनराइज होगा, फिर इंडिया में होगा ना। तो अगर वहां से यहाँ सनराइज हो रहा है तो सन के रेस कैसे आ रहे हैं? क्लियरली ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना अर्थ, तब जाके हमको वैसे वैसे रेज आ रहे हैं, है ना? अग्री? तो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। गुड। ओके, सो वी आर सेइंग कि ये जो, नहीं यार वेर एम आई, तो वी आर सेइंग क्लियरली अर्थ रोटेट करता है। अर्थ रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली उसका कोरियोलिस इफेक्ट भी काम करेगा, एंड कोरियोलिस इफेक्ट काम करता है तो विंड सीधा जाने के बजाय डिफ्लेक्ट होगा टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, क्लियर? गुड सो फार? हाँ, समझा सबको? ओके, गुड। नाउ वी आर लुकिंग एट प्रेशर बेल्ट्स। मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि प्रेशर बेल्ट्स कहाँ मिलते हैं, एंड देन उसके बाद हम वो प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स देख लेते हैं। ओके, ये वाली जो जगह है, दिस इज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ओके, ये इक्वेटर का होता है। क्लियरली टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। ओके, वी आर लुकिंग एट अ लो प्रेशर बेल्ट ओवर हियर, so this will be the low pressure belt. Okay, alternatively at 30 degrees north and 30 degrees south you will find high pressure belts. Okay, these are called as subtropical high pressure belts. Okay, you call them because they are in the subtropics now, so these are called as subtropical high pressure belts. You will find them over here. Okay, these are the subtropical high pressure belts. Then at 60 degrees again you will find low pressure belts. Okay, you call them subpolar low pressure belts. At 60 degrees north and at 60 degrees south you will find subpolar low pressure belts. And obviously at the poles, at the north pole and the south pole, you will clearly find high pressure belts, and those will be called as polar highs. Okay, polar high pressure belts. Is this good? Alternatively, you will get low and high pressure belts, okay, on the surface of the earth. Now, between these belts, okay, you will clearly have surface winds. There will be winds that will go from a high pressure region to a low pressure region. Okay, so let's consider this first. Okay, between the equator and 30 degrees north and south, the winds that blow over here are the northeast trade winds and the southeast trade winds. Okay, these are the winds that you're talking about. Ideally, they should have come straight, but clearly they get deflected to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. So उनका direction alter हो गया. Okay, तो वो northeast trade winds and southeast trade winds बन के आते हैं. Okay, between 30 and 60 degrees north and south, you will get the westerlies. Okay, ये 30 and 60 degrees north में जो north and south का जो belts है, वहां पे you get westerlies. Okay, and then यहाँ पे polar easterlies होते हैं. We are not so concerned about polar easterlies. Our major concern when it comes to planetary winds is just the trade winds and the westerlies. Okay, we are only going to compare and contrast them. Usually in exams, that is the only thing you're asked. Very rare. I have never seen a question on polar easterlies before, where you've been asked features of a polar easterly, or what practical applications a polar easterly has, or what kind of temperate cyclones it's bringing or not bringing, or whatever. Okay, I've never seen questions on that. Most questions are simply based on the trade winds and the westerlies. Okay, okay, clear so far? All right. Apart from all this, you need to understand if there are surface winds. Okay, means if the winds are going to come together at some place, they're converging. Clearly, they're converging at the equator. Then there is a convection cell setup. Okay, at all these places between the equatorial region. Where am I? Okay. We are saying between this place, between 0 degrees and 30 degrees, there is an upper air circulation also. Okay. How the winds are blowing. Can you see this circulation over here? That the winds are blowing in this direction, and then upper air circulation is in the opposite direction towards 30 degrees. Huh? So these are called as convection cells. Okay. Unko convection cells बुलाते हैं ideally. And you have to remember the names of these cells. Like between 0 and 30 degrees, you have the Hadley cell. Between 30 and 60 degrees, you have the Ferrel cell. And between 30 and 60 and 90, you have the polar cells. Okay. बस नाम है, याद रखिए उनके. Okay. Just remember that which cell lies between which latitudes. Is this good? Huh? Now we will, you don't have to worry. There is a proper explanation followed by how these pressure belts will develop and how they are formed. Okay. I just needed to give you a general background on it. All right. This is what we had seen earlier. We say equator, this is the equator, right? This is the low pressure belt. It is famously called as the ITCZ. ITCZ because it is the intertropical conversion zone. Both winds, both the trade winds will converge over here. So that is the conversion zone. Intertropical meaning between the tropics, right? It lies between the tropics, hence intertropical conversion zone, okay? So ITCZ.
Now, in that also you can differentiate between the NITC and SITC because you're looking at the northern intertropical convergence zone or the southern intertropical convergence zone based on where it lies. Okay, if it lies in the northern hemisphere, then northern intertropical. If it lies in the southern hemisphere, then it's southern intertropical. Okay. Let's see how this is formed in the first place. You're looking at the ITCZ or the equatorial low pressure belt. Okay, famously also called as doldrums because the air is very calm over here. Okay, there is simply no movement of air. Okay, you can feel the calmness of the air. Okay, so this is a low pressure zone famously called as doldrums because of the calm beds. Doldrums is also used as a normal English word when things are not going very well. So for example, if a company is not doing well, then you say the company is in doldrums, right? This is normally also used in English. So you say doldrums because of the calm winds, because not much is happening over here. Okay, intense heating at the equator. Clearly there is a lot of heating at the equator, so temperatures are very high. If the temperature is high, clearly the pressure will be very low. Okay, so low pressure regions are developed over here. If a low pressure region is developed, what can you expect? What will happen? See, I say this is the low pressure region. Okay, so the winds will converge over here. Obviously, you can expect the winds to converge. Which are the winds that are going to converge? Northeast trade winds coming from the northern hemisphere and southeast trade winds coming from the southern hemisphere. Okay, these winds are going to converge. But remember, this place is also very hot. Okay, this has a very high temperature. So once the winds converge, do they get together and create a mess? No, they simply rise up very quickly because they are warmed very quickly. Okay, the winds become very warm very quickly and then they rise up. Once they meet over here, once they meet at this place, then these winds quickly rise in the upward direction. They will meet together and they'll simply rise upwards. Okay, this is what happens. And why do these winds rise? Because of convection currents. Because what happens to warm winds? If air gets heated up, what happens to the air? It will rise up. It will become lighter and it will rise up, right? That is exactly the same thing that happens to these winds. Okay, so when these trade winds converge over here, they'll rise upwards. Okay, and when these winds rise upwards, they form a convective cell because if they are going to rise at 0 degrees, they'll have to go and descend at some other place, right? So they descend at 30 degrees. That is the way it works. Okay, they will rise at 0 degrees, travel all the way to 30 degrees, cool down over there because at 30 degrees clearly the temperatures are pretty low. So they will cool down over there. What happens to cool air? It becomes denser. It sinks. Okay, so they will sink or descend at 30 degrees north and south. Is this clear? So this is usually a zone of surface convergence and upper air divergence. What is happening to the winds at the surface? They're clearly meeting each other. Okay. What happens to the winds in the upper air? They're clearly diverging there and going towards 30 degrees north and 30 degrees south. Is this clear? Right. Okay. So please remember, doldrums is a place of calm winds, low pressure calm winds. That is what we are talking about. And also you have to remember that ideally you expect that wherever winds converge, there should be some sort of mess, storms, and the storms could be formed or something like that. But this doesn't happen, one, because northeast and southeast trade winds are both warm. Okay, it is not like they are of contrasting temperatures or contrasting characteristics. So clearly they are both warm. There is no reason for them to jumble up together and get, try to push each other here and there. Those winds will simply warm and descend at 30 degrees. Okay, that is what happens. Plus, you are lacking any sort of Coriolis force, so the formation of storms is a zero possibility. कोई possibility नहीं है storms बनने का. ठीक है? Now you move on to the subtropical heights. Okay? Clearly, मैंने आपको बताया था, हाँ, ये वाला diagram. यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा. See, this is the equator. We are saying this is the equator. ये वाला equator है आपका. ये 30 degrees north है, ये 60 degrees north है. Okay, ठीक है. Now what is happening? We are seeing how the Hadley cell and the Ferrel cell get formed. Okay, so we are seeing essentially what happens, that this is the north ना, so this is the southeast trade winds. इस तरफ से southeast trade winds आ रहे हैं, यहाँ से northeast trade winds आते हैं. Okay, northeast trade winds come from here, southeast from the right in the diagram at least. Okay, and clearly because of the high temperatures, this wind is going to rise above. Okay, once the wind rises above, it usually diverges, and when it diverges, it travels towards 30 degrees north and 30 degrees south. Okay, that is what the wind is doing. And when it reaches 30 degrees north and south, clearly it cools down because now the temperatures are pretty less. So where did it start from? At 0 degrees, the temperatures were very high over there. By the time it reaches 30 degrees, the temperatures are pretty low. Okay, so what the wind does is once it becomes cool, it becomes denser and it sinks down. Okay, so here it will sink down. So you are saying essentially from both sides at 30 degrees north and at 30 degrees south, clearly from both sides, from the equatorial end also and from the polar end also, you get winds which are traveling to 30 degrees north and south and descending over there. Okay, now if the wind is descending from above, what happens to the surface pressure? High pressure.
clearly a high pressure region is formed. Okay. Now this is not formed because of the temperature. This is formed because of the traveling, dynamically induced again. This is not a thermally induced region. This is a dynamically induced because the winds are traveling and descending and ascending and all that sort of thing. Okay. So clearly this is a dynamically induced high pressure belt because at 30 degrees, clearly winds from both sides and in the upper air converge and then they simply descend on 30 degrees north and south. And because of that, the region at the surface clearly becomes a high pressure belt. Okay. So we are saying this is a dynamically induced high pressure belt formed at 30 degrees north and south. Okay. So this is what it is called. Famously, it is also called as the winds that blow out. Now clearly it's a high pressure region. So from there, the winds are going to blow to a low pressure region. And which is the low pressure region that they're going to blow to? The equator. Okay. So winds will blow from the subtropical high pressure region. This is what we are talking about. The winds will blow from this is the subtropical high. This is the equator. Okay. So we are saying the winds will blow from the subtropical high pressure region to the equatorial low pressure region. Okay. That is the doldrums. And this subtropical high also famously gets called as the horse latitudes. Story pata hai? I told you no the other day the winds are very calm over here. Now it's a region of high pressure. So clearly calmness hota hai wahan pe. The winds are not, it is a high pressure region. So it's not like the winds are diverging from there. Okay. So it is not like you're going to get a lot of speed. So in olden days when people used to travel by ships and they did not have those motors steering them in places. So what they used to do is that they used to be backed up by the wind, right? Unless there was wind in your sails, you could not move forward. And people obviously, once they came to 30 degrees north and south, they were stuck over there at the at those latitudes. Unfortunately, water was in less quantity, clearly in less reserve. You know, पीने का पानी जो था, the drinking water that you used to have for the entire crew to suffice or survive on used to be very less. Okay. So the tendency of the crew used to be to throw away all livestock into the river, horses, goats, whatever livestock they were carrying, used to throw it into the river so that only human beings could suffice over that water. Because घोड़ों को क्या पानी पिलाएंगे, है ना? Like खुद के लिए पीने का पानी नहीं है तो घोड़ों को कैसे पिलाएंगे? So that is why the tendency used to be to throw that away. तो वेट भी कम हो जाता है एंड पानी भी नहीं पिलाना पड़ेगा घोड़ों को. तो दैट इज व्हाई दीस लैटिट्यूड्स फेमसली गॉट कॉल्ड एज द हॉर्स लैटिट्यूड्स. ओके, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर calm winds, and because it is surface divergence, the winds are diverging on the surface, going out from that surface, and clearly these were very low, very high pressure regions where the winds were very calm. So far you have seen the subtropical high and the equatorial low, and both regions have clearly calm winds. Okay, both regions have calm winds. Now you come to the subpolar low. Clearly, remember what was happening. Abhi subpolar low is once again going to be a region of if you are looking at, let's apply the same logic. We are looking at 60 degrees. Can you see that on the surface, clearly winds are coming in from both sides? Clearly, this is a low pressure region there. If the winds are clearly coming in from both sides, so once again, this is a dynamically induced low pressure region. Okay, this is going to be a dynamically induced low pressure region, and that is how the subpolar lows are formed. And what happens to the polar highs? That is a thermally induced one. The temperatures are so cold that clearly high pressure regions will be formed at both the poles. Okay, is this clear? So this is the formation of the belts. आपको सुनाई दे रहा है इसकी आवाज में? मेरी आवाज सुनाई दे रही? कैन यू हियर मी despite that? Okay. You take a break, a 5-minute break, but don't go away from the class and don't wander around in the building. That is not advisable. I'm giving you a 5-minute break because you can't keep accepting information so much.
We are back. So far we have seen the emergence of the tropical belts, pressure belts. We've seen how the pressure belts have emerged, and we've checked out. Now we are going to look at how trade winds, or we are looking at the basically planetary winds. Okay, we are going to look at those. So we are looking at trade winds and westerlies. Okay, those are the two things that we're really concerned about. Okay. ठीक है. So trade winds जो होते हैं वो famously, how will the trade winds blow? The trade winds blow from the equator towards the subtropical, from the subtropical highs towards the equator. Okay, you're saying the trade winds are going to blow from the subtropical high pressure region towards the equator. In the north, they come from the winds are always named after the direction in which they come from. Okay, so if you're coming from the northeast direction, they will be called as northeast trade winds. Okay, if they're coming from the southeast direction, they will be called as southeast trade winds. Monsoon winds कहाँ से आते हैं? Southwest से आते हैं, तो we call them as the southwest monsoon winds. Okay, so you are essentially saying कि trade winds will blow from the northeast direction towards the equator and the southeast direction towards the equator in the southern hemisphere. Okay, so these are the trade winds. With the trade winds, you have to understand that these are very regular and reliable, especially as compared to westerlies. Okay, westerlies can be a little irregular. Westerlies are supposed to be a little slightly variable, but trade winds are pretty regular. Okay, and the thing with these winds is that they are usually far more reliable and regular in the southern hemisphere because the abundance of land is less, right? You will clearly see a lot of water, and water does not influence winds or air pressure or temperature in the way land does, right? Land will influence wind and air pressure and temperature, because clearly it will create those localized centers of high and low pressure, localized centers of high and low temperature. Okay, such things do not happen with water. So clearly northern hemisphere is going to have a okay. So clearly, northern hemisphere is going to have less, less like regularity in the trade winds as opposed to the southern hemisphere. Okay. There is another thing that you need to understand, that trade winds usually when combined with cold ocean currents. Okay, trade winds in the cold when combined with cold ocean currents in a area from 15 to 30 degrees north and 15 to 30 degrees south usually leads to the formation of very dry deserts. Okay, आपको बड़े dry deserts मिलते हैं. उसका example आपको यहाँ मिलेगा. This is where you find the example of that. You are saying this is the equator. Okay, you're saying this is the equator. You're talking of Atacama Desert over here. There is the California desert in this region. There is the Sahara desert over here. Okay, you're talking of the Sahara here and the Namib over here. Okay, all these regions fall under that 15 to 30 degrees north or 15 to 30 degrees south wala area. Okay, you're looking at those latitudes, and you have to understand that over here the trade winds are usually offshore. You understand what offshore means? They are going from the land towards the sea. Okay, this is how the trade winds are moving. Sorry, not here. Here. You're saying that winds are moving from the land towards the sea. Okay, in this region, the winds are moving from the land towards the sea, and clearly because of that, if the winds are moving from land towards the sea, can they give precipitation to the land? Obviously not. Okay, because they're dry winds. They're going to be very dry winds. Okay, dry offshore trade winds, and clearly it has to be combined with cold currents. Okay, this is a Canary current over here. Canary current for the Sahara Desert, the Benguela current for the Namib Desert. Here you have the Humboldt current or the Peruvian current in case of South America. And here you have the cool California current. Okay, so you are saying that all these cold currents in combination with the dry offshore trade winds are going to give you desert-like conditions, very arid conditions, absolutely zero possibility of rainfall, very, very arid conditions, and hence the formation of these hot deserts. Okay, please remember this when it comes to trade winds. Okay. All right. ठीक है. Now moving on to westerlies. Okay. When you look at westerlies जो होते हैं, they are more known to, like how trade winds are famously known to be offshore, right, in certain regions. वैसे westerlies are more famously known to bring warm water and wind also to temperate regions. Okay, so temperate regions are pretty cold. Okay, so now when westerlies bring warm water and winds over there, clearly they create a very variable climate, and on most occasions than not, they are going to cause rainfall on the western coast of the continent. Okay, because mostly they are onshore there. You understand what onshore means? Onshore meaning they are moving from the sea towards the land. Okay, if they're moving from the sea towards the land, they're going to carry all that moisture of the sea along with themselves, and where do they drop all that moisture? On the land, whichever coast they are at. Okay, so western coast of continents are going to be far more rainier because of the westerlies. Okay, westerlies usually bring a good amount of rainfall over there.
Okay, there is another thing about the westerlies. They usually move from 30 degrees to 60 degrees, right? That is their area. 30 degrees to 60 degrees north and 30 degrees to 60 degrees south. Okay, but over here, especially in the southern hemisphere, they don't have a lot of obstruction of land. Okay, because it is full sea everywhere, so they don't have a lot of obstruction with land. So what happens with the westerlies is they become more and more speedy. They acquire more and more speed, as in how you go from the lower latitudes to the higher latitudes. Okay, so they get special names in those latitudes. For example, if they're blowing anywhere in the 40 degrees latitudes, they will be called as the roaring 40s. Okay, when they're blowing in the 50-degree latitudes, they get called as the furious 50s. And when they're blowing in the 60-degree latitudes, they get called as the stormy or shrieking 60s. Okay, ये definitely पूछते हैं आपको exam में. This is certainly asked. Which are these winds? So you need to know their westerlies. Where are they blowing? Usually in the southern hemisphere, they get all these names. And you can really hear the wind shrieking and screaming and roaring or furious. Like there is a reason why they are called as that. Okay. So you're looking at those winds. Okay. Do you understand this? Trade winds and westerlies? Good so far? Okay. Now we're looking at jet streams. Okay. Remember when I had discussed geostrophic winds, I had said the jet streams are a type of geostrophic wind where they will usually develop in the upper atmosphere, say 9 to 16 kilometers above the earth, above the surface of the earth, clearly somewhere at the tropopause. Okay, and also that there will be less frictional force. Okay, what did we say about the geostrophic winds? We said that the Coriolis force and the pressure gradient force are equal and balanced. Okay, equal and opposite होते हैं. So wind blows parallel to the isobars. That is the ideal condition. Okay. Now you need to understand that jet streams are a kind of a geostrophic wind. Okay, they're a kind of that. Jet streams are usually fast, narrow, meandering geostrophic winds. Okay, meandering meaning this condition, this. है ना? This motion of a jet stream is called as a Rossby wave. Okay, so this motion, that is how the jet streams are. You say this is the kind of motion that jet streams develop. Usually they move from a west to east direction. Okay, the direction is usually west to east. And they move throughout the surface of the earth about 9 to 16 kilometers above the surface of the earth. वैसे पूरा चक्कर लगाते हैं earth को. Okay, they will rotate around that place. Now jet streams are usually, clearly it is a wind. Huh? If wind is going to be developed, you need a pressure gradient. And if there is a pressure gradient, you need to have a temperature gradient, right? Logical enough? So you are saying these are the places where the jet streams are developed. Okay, this is the place where usually jet streams are developed. The subtropical jet streams will be developed at the interface of the Hadley and the Ferrel cell, and the polar jet streams will be developed at the interface of the polar and the Ferrel cell. Okay. Now, if you need a temperature gradient, you need warm air coming from somewhere and cold air coming from somewhere. Only that can give you a temperature gradient, right? Unless there is a temperature gradient, can there be a pressure gradient? No. So if you need can a wind blow without a pressure gradient? No. Can there be a pressure gradient without a temperature gradient? No, obviously not. So if you're tracking it backwards, you need to find the temperature gradient. And what is the temperature gradient? You're saying these convective air cells that are formed, the Hadley cell, the Ferrel cell, the polar cell, okay? At the interface of these, what is happening at the Hadley cell? Clearly warm air is rising over here, okay? And what kind of air is coming from here? A little warmer. This air is going to be a little warmer, right? This is going to be a bit of warm air, okay? What do you say about the air that is coming from 60 degrees? Clearly, it is going to be a bit colder, okay? So when this warm and cold air will meet, clearly, there is going to be a temperature difference. There will be a temperature gradient. If there is a temperature gradient, then there is a pressure gradient. If there is a pressure gradient, then the wind will flow accordingly. Samjha? Clear? You don't have to really go into very, all those the nitty-gritty details of it. You just need to remember that if there is a wind that is blowing, it cannot blow without a pressure gradient. If there is a pressure gradient, there has to be a temperature gradient. So if there are contrasting air winds or contrasting temperatures of winds meeting, it has to be at this interface where there will be a warm wind coming from some place and a cold wind coming from the other place. Okay? So this is the place that we're looking at. Okay, let's look at this. This is now when the wind over here comes at this particular point, okay, where polar jet streams are developed, you can see that clearly the winds over here are going to be a bit colder, the winds over here are going to be a bit warmer, okay? So once again, the meeting point, wherever they were diverging or whatever the meeting point is, you're going to say once again, that is a contrasting air masses. You can say one wind is cold, another wind is hot. So again, you find a temperature gradient. If there's a temperature gradient, there's a pressure gradient and the wind will blow, okay? Jet streams will be formed over there. So this is where the jet streams are formed. Jet streams are usually formed above, okay? So clearly they are not formed at the surface. They are formed 9 to 16 kilometers above the surface of the earth.
And the location where they are formed is usually the interface of these cells, okay, these convective cells. At the Hadley and Ferrel cell interface, you will find the subtropical jet streams. At the Ferrel and polar cells, you will find the polar jet streams. Okay, polar jet streams are way the more the temperature difference between the warm and the cold air, the stronger the jet stream, meaning it will be faster. The more the wind velocity of the jet stream. Okay, so the more the temperature difference, more the wind velocity of the jet stream. Okay, in that sense, polar jet streams are way faster. They are supposed to be the fastest ever, and they are supposed to be the strongest ever also. Okay, so subtropical jet streams not so much. All right, that is what we're saying. Okay. So you're saying that as long as there are differing air masses, okay, air masses with different temperatures, as long as these meet, jet streams will be formed. Okay, so you will find them at the border of the Hadley and Ferrel cell and the Ferrel and the polar cell. Okay, that is where you're going to find. Now, these streams जो होते हैं ना, jet streams जो होते हैं, the temperature, the speed of that will usually vary between 120 to 220 kilometers per hour and will reach up to 440 kilometers per hour. You can imagine how fast that jet stream would be, right? 440 kilometers per hour is a very high speed. And these usually extend from 20 degrees latitude to the poles in both hemispheres. Okay, so this is where the jet streams are developed. I'll show you where the jet streams are usually developed. See this? This is how the jet streams look like. So the subtropical jet stream will be developed at this location usually. And once again, with the movement of the sun, these jet streams are also going to move up and down a little. They will also move a little up and down in the northern and southern hemisphere. And polar jet streams are usually developed at the juncture of the ferrule and the polar cell, right? So this is where they usually develop. And this motion that you can see, this meandering motion that you can see, that is famously called as a Rossby wave. The thing about it is, when you study Rossby waves in weather, so you say that generally, if this is this is clearly a ridge and this is a trough, right? In the waves, this is the trough and this is the ridge, right? So ridges will usually be at places where, the temperature spikes. There will be a warm weather, temperature will spike or something like that. And troughs will usually be places where the temperature falls down, cold weather conditions, coldish, rainish conditions. That is what you'll find over there. Okay. Yeah, like I said, airlines will usually try to use the jet stream to their advantage to save on the fuel and everything. Okay, so you usually try, if there is a jet stream going your way, you will try to get inside the jet stream and take the plane there. If there is a jet stream going against you, you try to flow either above or below it. Below it will be preferable, so that you are trying to go against the, you burn less fuel if you're trying to go against the wind. Okay, because how can you try to fight something that is trying to move at a speed of 120 to 440 kilometers per hour, right? You don't want to get into that trouble, clearly. All right. Now, these are the three examples of the jet streams that we are looking at. The subtropical jet streams, tropical easterly jet streams, and the polar jet streams, okay? The tropical easterly and the subtropical jet streams are important for us because they bring to us precipitation in one form or another, okay? And that is important for us. Blue shirt, blue shirt. Can you please not talk? Thank you. Subtropical jet streams जो होते हैं, they are developed usually in the winter or early spring. Okay, it is these jet streams that usually, if these jet streams are blowing, they are usually going to bring fair weather in areas that they pass over. Okay, usually very fair weather conditions. Fair weather conditions meaning not rainy conditions. Okay, that is fair weather. This is not fair weather. This is rainy. What is going on outside? Okay, that is pretty rainy. Okay, now usually ये जो western jet stream होता है, that will bring western depressions into India. Remember that day when we were discussing questions, we had discussed the Punjab gets rains over here in the winters just before the wheat harvest. Okay, so this is where the tropic temperate cyclones are developed. Usko disturbances बुलाते हैं, depressions बुलाते हैं. Yeah, you can simply call it a temperate cyclone. Okay, so this is the Mediterranean is where they are developed. And then they are brought by the westerly jet stream all the way up to India, because that is the direction of the jet stream, right? And this is the location also of the jet stream. So these are brought straight from the Mediterranean all the way up to India, and India receives rainfall over here, okay, which is very beneficial to a wheat crop or wheat harvest, okay. Second jet stream that is important for us is going to be this, the tropical easterly jet stream. This is the result of a tropical easterly jet stream, the burst of monsoon that you feel. You understand the burst of monsoon? When monsoon arrives, it is not just a drizzle of rainfall. Is it ever a drizzle of rainfall? No, it feels like somebody's pouring buckets on your head, right? The first day of rainfall is always like somebody is pouring buckets on your head.
That is called the burst of monsoon. Okay, monsoon always arrives with a burst in India, and that is brought by the tropical easterly jet stream. It is the tropical easterly jet stream that's responsible for bringing it to India. Is this good? Huh? If it is easterly, clearly it is coming from an east direction. If you're saying subtropical jet streams, clearly it is coming from a western direction. People, please remember, it is the wind is always specified based on the direction from which it comes from. If you're calling it westerly, it is coming from a western direction. If you're calling it an easterly jet stream, then clearly it is coming from an eastern direction. Okay, okay. And lastly, you come to the polar jet streams. Polar jet streams जो होते हैं, they meander through the upper troposphere over the poles. Okay, now these are usually around the poles, and they are known to be the strongest or the fastest with wind speeds above 400 kilometers per hour. This you got to remember. That is that. All right, and that finishes off. No, that does not finish off. We still are going to do shifting of pressure belts. Okay, okay. Let's try to do shifting of pressure belts. Shifting of pressure belts माने you clearly know there are pressure belts that are formed. You know, there is a equatorial low pressure in the middle, subtropical highs at 30 degrees north and south, and subpolar lows at 60 degrees north and south, and polar highs and polar lows. Okay, both polar highs. Okay, north pole and south pole. So these are the pressure belts. Okay. Now, like we discussed, with the apparent movement of the sun, all these the entire set of pressure belts can move slightly upward, northward, or it can move slightly southward, depending on where the sun is going. If the sun is moving from the equator towards the Tropic of Cancer, clearly all these belts will move a little to the north. Okay. If the sun is moving from the from the equator towards the Tropic of Capricorn, clearly all these belts will move a little towards the south. Okay. So it is the shifting of these pressure belts that are going to cause two very famous climates. One is the Mediterranean climate, the second is the monsoon climate. Okay. We'll look at how these work. We are saying that एक सेकंड ना okay. I'm focusing on the Mediterranean region. I'm focusing on a very specific Mediterranean region. We are saying this region is famously called as the Mediterranean region. This belt, between this is some 30 to 45 degrees north. Okay, we are saying that is famously called as the Mediterranean region. Now you need to understand this part, that if you say that the winds, all the pressure belts are moving a little towards the north. Okay, if the sun is moving in the summer, what happens in the summer? You are saying that the sun is on the Tropic of Cancer, right? 21st June ko sun kahan hota hai? It is directly overhead the Tropic of Cancer. Okay, when the sun is directly overhead the Tropic of Cancer, clearly that is the point which is going to be the northernmost movement of the sun. Okay, beyond that the sun cannot move northward, right? So clearly that is the northernmost movement of the sun. Now when that is happening, clearly all these pressure belts are moved a little upward. Okay, all these pressure belts go upward. At that time, this particular place, we are looking at Italy and the Mediterranean and all. This particular place में ये जो 30 degrees north का belt subtropical high का belt होता है, subtropical high pressure belt, okay, that also shifts a little northward. Okay, that will also move a little northward. So it lies somewhere over here. Okay, that becomes the subtropical high. This becomes the subtropical high. Okay. Now what happens to the subtropical high? Air will blow, northeast trade winds will blow over here. So what is the direction of the northeast trade winds? Now the northeast trade winds are going to blow from the land towards the sea. Okay. Anything moving from the land towards the sea, any wind moving from the land towards the sea, can it contribute any sort of precipitation? Can it give any sort of rainfall? No, it cannot, because it is moving from a dry place to a moist place. Okay. So if it is moving from a dry place, clearly it has no moisture of itself for itself, and clearly it is not going to give any precipitation to the land. So in summers, Mediterranean region comes under the influence of dry offshore trade winds, and that is why during summers that place does not get any rainfall at all, which is very, very weird for any climate. Normally, most climates all around the world will get rainfall in summer. You will definitely get rainfall in summer. Okay, this is the only climate in the world which says no summer rainfall. Okay, whatever normally what happens is, if you are getting rainfall in winter, that is just a bonus rainfall. Okay, most rainfall usually comes in summer. Even if you consider China, which gets a good amount of winter rainfall, you also have to realize that rainfall, the majority of rainfall comes in summer. If you consider the equatorial region, then you're getting rain throughout the year. You don't have to distinguish. There is no season as such in the equatorial region, right?
You don't have to say that you are getting more rain in the summer, more rain in the winter. You're getting rainfall throughout the year because it is raining every day. It rains every day at the equator, right? So you're essentially saying that there is no season over there. So you can't distinguish you're getting summer rain or winter rain. But in places where you do get summer precipitation, you're looking at a very specific region where even if you're getting winter rainfall, your majority rainfall comes from the summers. Okay, look at India. Where does India's majority rainfall come from? Southwest monsoon. Monsoon is ideally a continuation of summer. We are calling it monsoon because it is very different for our conditions. Okay, so we are specifying it as a different climate. But ideally, it is a continuation of summer. So even we receive our rainfall in summers only, an extended summer. Okay, but ideally, this is the only climatic region in the world that does not get rainfall in summer because the winds are dry and offshore in summer. Okay, this is what happens in summer. Okay, now let's look at what happens to it in winter. We are talking of this region. Okay, we are specifically talking of this region. In winter, what happens is all the pressure belts are good. The sun is exactly on the Tropic of Capricorn. Okay, exactly over here, the Tropic of Capricorn. Clearly, all the pressure belts are shifted downward. Okay, all the pressure belts from top to bottom are going to shift a little downwards. Okay, towards the south. So because of that, now this region comes under the influence of the westerlies. Okay, this region will now come under the influence of westerlies. Okay, now westerlies are onshore over here. They are moving from the sea towards the land. Okay, so if what happens is because this region comes under the clearly if the pressure belts are going down, so your subtropical high is somewhere over here. Okay, you're saying this is your subtropical high now. The subtropical high that used to be somewhere at this place in the summer has finally landed over here in winter. Okay, and because of that, what happens from the subtropical to the subpolar low? What is moving? Westerlies. So these are now the westerlies which are moving from the sea towards the land. If a wind is moving from the sea towards the land, obviously it will give precipitation to that land, right? Because it is moist now. And where is it going to drop all that moisture? On the land itself. So these get winter rainfall. Mediterranean climates are very, very famous for having dry summers, hot, dry summers, and wet, mild winters. Okay, that is how the Mediterranean climate is formed. Is this good, people? It is the westerlies that bring rainfall because it is the western coast, right? So it is the westerlies that will bring rainfall over there. Okay. Next thing that you have is the monsoon climate. Okay, the second climate which is influenced by the shifting of the pressure belts is the monsoon climate. Now, what happens with the monsoon climate is we are going back over here. Equator. Okay. What is normally blowing over here? The southeast trade winds, right? You're saying it is the southeast trade winds over here and the northeast trade winds from that side. Okay. So we are saying this is what is happening. Okay. Now when it is summer, clearly all these belts will move a little upward. Okay. So this southeast trade winds are actually going to move in this direction now. Okay. They cross the equator. They cross over the equator. From the equatorial position, they'll actually cross a little above. Okay. But if they are going in this direction, can they still be southeast monsoons? No. Now they are in the northern hemisphere. Now they are going to be deflected towards the right. Okay, they'll move a little towards the right. So now in this place, they become these winds. Okay, they famously becomes these southeast trade winds will turn into southwest monsoon winds, and they will give precipitation to this coast of India. Okay, is this here? So this is famously southwest monsoon winds because of the shifting of the pressure belts. Okay, it is the southeast trade winds that are moved upward in the northern hemisphere. But since they are moved in the northern hemisphere, now they have to move according to the northern hemisphere. So they will shift or deflect to the right. And once they deflect to the right, then they'll clearly bring. Now they're moving from that entire huge Indian Ocean towards the Indian coast. So they are going to give a tremendous amount of rainfall over there. Okay. And not just us, they'll give rainfall to this part of region also. No? They'll go further more, China, Vietnam, whatever. They're going to give rains to that part of the world also. Okay. Now let's look at what happens to, wait a minute. ये use करेंगे. Okay. Let's look at what happens to in the winters. Okay. In the winters, what happens? Clearly, all these pressure winds are shifting downward. Okay, so now these trade winds come under the influence of north. This is the northeast trade winds. Okay, now they will come under the influence of northeast trade winds. Now these northeast trade winds will travel from the sea towards this particular coast of India, the southeast coast of India, Tamil Nadu, Andhra coast. Okay, and they will give rains to that part.
So Tamil Nadu and Andhra coast are one of those few places that do not get rainfall in summers, but they do get rainfall in winters. Okay, would that classify as a Mediterranean climate? No, that still does not classify as a Mediterranean climate. It's simply classified as a dry summers climate. Okay, it will still be a tropical climate, but it will be a dry summer kind of climate. Okay, okay, fine. Is this good? So this is the shifting of pressure belts, which leads to the variation in the Mediterranean and the monsoon climates. Are we good, people? अब आसान है. अभी ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आसान होगा. अभी बहुत दिमाग नहीं लगाना. Now we are looking at winds. Okay, now this you have to remember. Winds, I don't know how you will remember this. The way you remember ocean currents, you got to remember winds. You'll have to remember whether they are warm or they are hot, warm or cold or whatever. And then you'll have to remember which area or which region which they specifically belong to. You'll just have to remember this. This is usually what they ask you. Okay? Okay? If you're looking at winds, we have seen planetary winds go over a specific region in a very specific direction and all through the year and so on and so forth. Okay, so those will be called as planetary winds. Then there are those which we call the seasonal winds, like we have the monsoon winds. Okay, so now they are going to blow only for the duration of the monsoons, only for 4 months, say June to September. That's what the direction is going to be. Okay, so we are saying that these will change according to the season. So we call them seasonal winds, like we are calling the monsoon winds. Okay, monsoon winds in Southeast Asia. Now we look at typical winds, which we call as the sea breeze or the land breeze. Sea breeze को देख लीजिए. Once again, please remember the property of the land. That land has this very specific characteristic or feature that during the day it warms up very easily, and during the night it cools down also very quickly. Okay, land simply radiate कर देता है सारी heat बाहर की तरफ. तो वो रात को जल्दी कूल डाउन हो जाएगा and during the day it will absorb more and more heat. That is just the way land works. Okay, it will absorb more and more heat to become hotter and hotter and hotter. Okay, that is what the land does. So please remember, land will heat up faster and cool down slower than the water. Okay, that is what land is going to do. So what happens during the day is that during the day this land is going to heat up very quickly. Okay, so this becomes a high temperature region. If this is a high temperature region, what kind of pressure will be developed over here? Low pressure. Okay, what happens to the sea? Clearly the sea will not heat up very quickly. Okay, so the temperature is going to remain a little low. So comparatively, the pressure is going to remain a little high over here. And where will the wind blow? The wind will blow from the sea towards the land. Okay, so if it is blowing from the sea, what will you call that? A sea breeze, because it is coming from the sea. Okay, so you call that as a sea breeze. All right, so a cool sea breeze will flow from during the day. You will see that a cool sea breeze is going to flow. Okay, look at what happens at night. Okay, at night the land is going to try to cool off very quickly. Okay, it tries to cool down very quickly. So clearly you have low temperatures over here. If this is a low temperature region, what happens to the pressure? Pressure is clearly high. Okay, what happens to the water? The water will not cool down as quickly as the land. So clearly relatively high temperatures over here. Okay, relatively high temperatures, and hence a slightly low pressure area will be developed over here. Okay, so रात को the wind that blows, the direction is from the land towards the sea. Okay, so you will see that the wind will blow from the land towards the sea. Once again, there is a story here. In olden days, when people once again did not have very high technology for boats and stuff, what they used to do, especially in fishing villages, is that they used to go out at night. Okay, because there is a proper land breeze powering you, right, straight into the sea. So they used to take all their fishing gear, nets and stuff like that, and go into the night and fish over there. And then during the day, when it is early morning, they used to come back because the land breeze, the cool sea breeze will bring you in. So they used to use the land and the sea breeze to fish. That is how people used to work in the olden days. Okay, but अभी तो clearly आपको जरूरत नहीं, अभी तो आप दिन दहाड़े जाके fishing कर सकते हैं. Okay, here we are. The next kind of thing that we are looking at is the mountain breeze and the valley breeze. Okay. All right, now you have to look at this. This is the valley breeze that we're looking at. During the day, more than the valley, the slopes of the mountain get heated up easily. Okay, so the slopes are going to get heated up very easily. So if they are going to get heated up, what happens to the air? The air will rise over here. Okay, so from the valley, the wind will blow upwards. Okay, so that is called as a valley breeze. That happens during the day. Okay, what happens during the night? This slope will cool down faster. Okay, so all the cool and dense air from here will move from the slopes towards the valley. Okay, so this kind of downward movement of the slope of the wind happens, which we call as the mountain breeze. Okay, so mountain breeze blows at night
because the slopes are cooler and the wind will blow downwards. Okay, winds that usually move downwards from a slope, from a altitude, which go down and compress and all, are famously called as katabatic winds. ऐसे winds को katabatic winds बुलाते हैं. नाम याद रखिएगा, कहीं कुछ दिख गया तो याद रहेगा आपको. Okay, they are famously called as katabatic winds. Is this good? Okay. Now you're looking at local winds. Okay. Local winds are produced by the variations in local temperature and pressure. I'll give you a very simple example. In India, just before the monsoons, a little, when the summer is really, really at its peak in, during April or May, what happens is West Bengal, this region, we are talking of this region. West Bengal, this Assam region, this West Bengal region, Assam region, this Konkan coast gets heated up very quickly. Okay. एंड वहां पर लोकलाइज्ड हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है. ओके, लोकलाइज्ड टेम्परेचर्स आर वेरी हाई. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन थंडरस्टॉर्म्स आर डेवलप्ड. हैव यू हर्ड ऑफ दैट मैंगो शावर्स? अमृतसरी बुलाते हैं हम उसको, कोंकण कोस्ट पे. या देन काल बैसाखी ओवर हियर इन वेस्ट बंगाल, और वो इन असम आल्सो यू हैव लोकलाइज्ड विंड्स. सो ये जो लोकलाइज्ड विंड्स या लोकलाइज्ड रेन्स मिलता है वो लोकल विंड्स होंगे. ओके, दोज आर द लोकल विंड्स. See over here in Punjab and Uttar Pradesh along the Ganga plains, you see there is a localized pressure region, localized low pressure region formed in the summers, and because of that the wind will blow in this direction. Okay, this is the direction in which the wind blows. The wind will keep blowing in this direction. Okay, famously called as लू. देखा है आपने, ड्राई डस्टी विंड होता है. गवर्नमेंट आपको एडवाइजरी भेजता है कि लू चलती है तो डोंट बी इन द मिडल ऑफ दैट विंड, घर में रहिए, पानी पीजिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन से एंड हीट की वजह से इट कैन बी अ रिस्क टू लाइफ. वो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकती है फॉर पीपल्स हेल्थ एंड लाइफ. ओके, सो वो लू जो है वो भी एक लोकल विंड ही होता है. ओके, वी आर नॉट लुकिंग एट द लोकल विंड्स इन इंडिया, दैट विल कवर इन इंडियन क्लाइमेट. I'm just telling you what a local wind is so that we can cover them the world over. Okay, now we are looking at various regions where you will find these winds. ये आपको नजर आ रहा है ये वाला कहाँ कहाँ विंड्स है? हाँ, मैं छोटा करके बड़ा करके बता देती हूँ. मैंने ऐसे बनाए हैं ये विंड्स की वो जो थोड़ा सा ब्लूइश कलर में दिखता है, दैट इज गोइंग टू बी अ कोल्ड विंड और कूल विंड. एंड ये जो थोड़े से ब्रिक कलर में नजर आ रहे हैं, पिंकिश कलर में, दे आर गोइंग टू बी वार्म विंड्स और हॉट विंड्स. ओके, दे आर गोइंग टू बी स्लाइटली वार्म विंड्स. Okay, so let's look at the first wind. We are looking at a wind called as norte. It is the cold wind that blows in Mexico along the Gulf of Mexico. Okay, this is the Gulf of Mexico. Can you make out the Gulf of Mexico over here? So the norte is blowing in this direction. Okay, towards Mexico, in the Gulf of Mexico, it's a cold wind blowing there. Okay, ठीक है. There is the nor'easter blizzards. Okay, northeaster blizzard बोलना चाहिए उसको. अभी इसको ना सिर्फ लोकल विंड नहीं बुला सकते, इट्स मोर ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन. ये विंड जब चलता है तो वंस अगेन गवर्नमेंट एडवाइजरी निकलती है. Schools, colleges, offices, even hospitals are closed down. You've seen those pictures where entire cars are buried beneath snow. ये वो वाला wind है. This is that blizzard. ये blizzard जब आता है तो सचमुच सब कुछ बंद किया जाता है एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता if you are a daredevil and you want to go out in the snow somewhere. Okay, because कैसे आप how can you possibly rescue when there is like multiple feet of snow over there? कैसे रेस्क्यू करेंगे आप लोगों को? तो क्लियरली सबको बोला जाता है स्कूल कॉलेजेस बंद, सबको ऑफिसेस बंद, सब घर पे रहो, घर से काम करो. ओके, सो दिस इज द नॉर्थ ईस्टर ब्लिजर्ड. ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में मिलता है आपको. दिस इज, कैन यू मेक दिस आउट ओवर हियर? दिस इज द नॉर्थ ईस्टर ब्लिजर्ड. ओके, ओ हीरो, सारे लोग पीछे कैसे बैठ गए आप लोग? आगे आ जाइए. ब्लू शर्ट आगे आके सोइए. वहां जाके गप्पे लड़ाएंगे. यार आप लोग सो ही जाइए. आप जाग क्यों रहे? अब जितनी देर जागेंगे ना उतनी देर बातें करेंगे, फिर उतना डिस्टर्ब करेंगे मेरा फ्लो. ना कीजिए ना ऐसी चीजें. Okay, so we are talking about the nor'easter blizzards, really cold winds. Clearly temperate cyclone करके classify कर लेना चाहिए हमें उसको. Okay, heavy rains, thunderstorms, snowfall definitely बहुत ज्यादा होता है. Okay, now let's look at Pampero. Okay, Pampero करके एक wind होता है. It's a cold wind. It blows in the Pampas region of Argentina. है ना, पता है ना, साउथ अमेरिका का Pampas grassland होता है तो वहां पे ब्लो करता है. अभी कोल्ड विंड है तो क्लियरली विंटर में तो बहुत ही बुरा होगा हाल होता है, लेकिन समर्स में इट इज वेलकम. ओके, इट इज अ वेलकम विंड इन समर्स. ब्राउन शर्ट कम एंड सिट हियर एंड ब्लू शर्ट कम एंड सिट ओवर हियर. कोई बात नहीं, आप आगे आके बैठ जाइए.
No, either you come and sit ahead or you leave the classroom. Brown shirt, come and sit ahead or leave the classroom. Okay. Okay. So you are saying temperature wind hota hai, that is considered unwelcome in the winters because it's a cold wind, but it is pretty welcome in the summers because it is warm and it clearly feels pleasant. Okay. Now you look at this wind. ये कैलिफोर्निया के जो दो winds है वो देख रहे हैं. नॉर्थ में डायब्लो नाम का एक wind होता है. नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में you have a wind called डायब्लो. And in southern California, you have a wind called Santa Ana. Okay, both hot winds, both very warm winds, and very unpleasant feeling winds. Okay, बहुत unpleasant लगता है वो wind से. Because California is generally known for its high temperatures. वहाँ पे कोई ऐसे sunny है California में ना, Hollywood है वहाँ पे. वो कुछ ऐसा ठंडा ठंडा नहीं है. It is pretty sunny out there. उस पर से अभी एकदम hot winds चलेंगे वहाँ पे Diablo and Santa Ana, तो it's going to feel also more unpleasant. Okay, ये दो winds बहुत जरूरी है. Chinook and Fane और Four. Okay, अभी Chinook जो है वो यहाँ का wind है. ये वाला दिख रहा है आपको? ये ये जो रॉकीज है यहाँ पे, रॉकी माउंटेन्स. ओके, तो रॉकीज का जो स्लोप होता है, दिस इज द स्लोप फॉर द रॉकीज. तो ये विंड ऐसे वहां से नीचे आता है. ओके, इट विल कम फ्रॉम अबव, तो नीचे आता है. ड्राई विंड होता है. ऑब्वियसली नीचे आते वक्त कंप्रेस करेगा हवा को. अगर कंप्रेस करेगा तो और ज्यादा हॉट हो जाता है. ओके, टेम्परेचर्स विल राइज वेरी क्विकली. अब ये विंड जो होता है, इट इज फेमसली कॉल्ड एज अ, चिनूक इज द लोकल नेम फॉर इट. उसका मतलब होता है स्नो ईटर. ओके, इट ईट्स अप ऑल द स्नो बिकॉज इट विल मेल्ट ऑल द स्नो. द टेम्परेचर्स विल राइज सो रैपिडली विद इन अ स्पेस ऑफ अ hour or a few minutes that it feels starts feeling pleasant, especially when the it is winters or it is really cold out there. It will usually feel a little pleasant. Okay, थोड़ा सा beneficial होता है ये wind. So that is chinook for you. Okay, same with phone of a ये जो wind होता है, it is a warm, dry, warm downslope wind in the Alps. Okay, Alps माने यहाँ पे है आप. Can you see the phone over here? हाँ, ये फोन विंड है. ओके, तो ये भी थोड़ा सा डाउन स्लोपी विंड है. ये एल्प्स के स्लोप से नीचे आता है. द थिंग इज ये रेंज शैडो रीजन में थोड़ा सा नीचे आ जाता है एंड ये यूजुअली विंटर्स में नीचे आएगा बराबर टूरिस्ट सीजन के टाइम पे. ओके, अगर टूरिस्ट सीजन पे टेम्परेचर्स थोड़े कम हो गए एंड यू आर नॉट, फॉर एग्जांपल यू बीन टू द Alps in Europe for a vacation or something like that, and you are wrapped up completely, what kind of photos are you going to have, right? And what kind of vacation are you going to have clearly? So for the tourism season, it definitely helps if the temperatures are not freezing cold. Okay, you want to see and everything, but you don't want to be freezing cold where people will simply die from stepping out in the wind. Okay, so clearly this wind helps over there. It is good for the tourist season. Okay, okay, so that is phone of fame for you in the Alps. Now you move further downwards. Okay, there are two winds here. In Australia, we are looking at two winds. One is called as the southerly buster, the other is called as the brickfielder. Okay, can you see these two over here in Australia? The brickfielder is coming from the land towards the sea. It is a hot wind. Okay, तो थोड़ा सा hot wind होता है coming from the land towards the sea because desert region से वो जो southern desert region है वहां से बाहर की तरफ land की तरफ आता है. ये southerly wester जो होता है, that is a cold wind. Okay, that's a proper cold wind and it will create a dramatic drop in temperature. बहुत जल्दी से temperatures drop कर जाते हैं. Okay, that is the brickfielder and the southerly wind. Now we look at helm. Helm करके एक विंड है, उसको जाके ढूंढते हैं. दिख रहा है आपको? कोल्ड विंड है जो नॉर्दर्न इंग्लैंड में मिलेगा आपको, इंग्लैंड के रीजन में मिलता है. ओके, उस विंड को हेल्म बुलाते हैं. आई एम सॉरी बट दैट इज द वे यूपीएससी एग्जाम गोइंग टू वर्क. यू आर गोइंग टू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीस विंड्स एंड व्हिच रीजंस दे आर ब्लोइंग इन एंड वेदर दे आर हॉट और कोल्ड. ओके, वो तो याद रखना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. आप अपना कुछ नेमोनिक्स लगा लो लेकिन विंड्स को तो याद रखना पड़ेगा. Okay, and then you have these two winds, Buran and Kara Burana. Let's look at Buran and Kara Buran. Can you see the Buran over here? Buran is a cold wind. Okay, Buran is a famously cold wind. वो थोड़ा सा साइबेरियन, ये cold रशियन साइबेरियन रीजन में थोड़ा सा cold wind चलता है. And it is also उसको अलग अलग रीजन पे अलग अलग नाम से बुलाएंगे. Okay, अगर रशियन इसमें होगा, सेंट्रल एशिया में वगैरह होगा, नॉर्मली नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एशिया में होता है. अगर रशियन टुंड्रा में होगा तो उसको फुर्गा बुलाएंगे, अगर अलास्का में होगा तो उसको बुर्गा बुलाएंगे. ओके, ठीक है, यू विल जस्ट कॉल दिस विंड बाय डिफरेंट नेम्स. रिमेंबर कोल्ड विंड, रियली सॉलिड कोल्ड विंड. एंड देन देयर इज द कारापुरान. कारा मींस ब्लैक. कारा मींस ब्लैक. काराकोरम को काराकोरम क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इट्स ब्लैक, है ना. तो वैसे ही कारापुरान मींस ब्लैक. ओके, ब्लैक कलर का विंड आता है. नाउ वो रीजन व्हाई द विंड इज ब्लैक इज बिकॉज ये देखिए किस रीजन में ब्लो करता है. इट इज इन द तारिम बेसिन. हाँ, वो जो गोबी डेजर्ट वाला रीजन है ना, उसके आसपास वाला. हाँ, वी आर लुकिंग एट द तारिम बेसिन. अभी तारिम बेसिन की स्टोरी ये है कि वो बेसिकली वोल्केनिक रीजन नहीं है, लेकिन बहुत पुराने जमाने में इट यूज्ड टू बी अ ह्यूज वोल्केनिक
ओके, बड़ा सा वोल्केनिक प्रोविंस हुआ करता था, तो वहां का जो उसके नीचे का जो पत्थर है, वो सॉइल के नीचे जो पत्थर है, दैट इज गोइंग टू बी अ वोल्केनिक रॉक। तो वो वोल्केनिक रॉक का जब वेदरिंग होता है, बेसॉल्ट का वगैरह जब वेदरिंग होता है और उससे मिट्टी बनेगा, सॉइल बनेगा, तो वो कौन से रंग का होगा? काला। ओके, ये ब्लैक कलर का सॉइल जब वो विंड उठा उठा के जगह जगह लेके जाता है, तो उसको काराकोरम बुलाते हैं। ओके, ठीक है। दैट रीजन बिकॉज ऑफ बीइंग सो baked, properly baked ना, is also very famously China's very important region for oil and natural gas, बहुत important, economically बहुत important region है ये। ओके, ठीक है। सो यू आर सेइंग कि ये जो काराबुरान होता है वो तारिम बेसिन में ब्लो करता है, एंड एक बर्फ करके विंड है। हाँ, ये साउथ अफ्रीका में, कैन यू सी दिस विंड ओवर हियर? हाँ, दिस इज गोइंग टू बी अ बर्फ। अब ये तो वैसे ही ड्राई डस्टी डेजर्ट वाला रीजन है, तो ये यहाँ से बाहर की तरफ जाता है तो ड्राई एंड ऑफशोर होगा। ओके, सो क्लियरली ये भी वार्म विंड्स है। बर्ग इज ऑल्सो अ वार्म विंड ओवर देयर। ओके, फिर क्या है आपके पास? हरमटान। लेट्स लुक एट हरमटान। हरमटान इज एन इंपॉर्टेंट विंडो। कैन यू सी द हरमटान ओवर हियर? हाँ, ये हरमटान नजर आ रहा है, ये सहारा से निकलता है एंड गल्फ ऑफ गिनी की तरफ आता है। ओके, यू आर मूविंग फ्रॉम द सहारा रीजन ओवर हियर टू द गल्फ ऑफ गिनी। हाँ, सहारा से निकलता है तो क्लियरली वार्म विंड होगा। हाँ, इट इज गोइंग टू बी अ वार्म डस्टी काइंड का विंड। ये गल्फ ऑफ गिनी की तरफ जब जाएगा ना, तो वहां पर अभी इट इज अ सी कोस्ट, तो बॉम्बे में एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वेदर कैसा होता है? ह्यूमिड, राइट? तो यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी बहुत होती है, कोस्टल रीजन है तो क्लियरली ह्यूमिडिटी बहुत होती है। तो वंस द विंड कम्स इन, वो ह्यूमिडिटी से ड्रॉप कर जाती है। ओके, वो ड्राई विंड है ना, जो ड्राई विंड ह्यूमिडिटी का क्या करेगा? खा जाएगा ह्यूमिडिटी को। सो क्लियरली वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो इमीडिएटली ड्रॉप कर जाती है एंड इट स्टार्ट्स फीलिंग प्लेजेंट। सो द विंड फेमसली गेट्स कॉल्ड, लोकल लैंग्वेज में उसको डॉक्टर बुलाते हैं। ओके, दैट इज दे सिंपली कॉल द विंड एज डॉक्टर बिकॉज इट starts, the weather starts feeling very pleasant after that. Okay, so that is the harmattan for you. Okay, and now ये दो winds बहुत जरूरी है, ये ठंडे वाले और गर्म वाले। हाँ, we are looking at a specific set of winds that blow in the uh, Alps. Okay, ये Alps में जो blow करने वाले cold winds है, जो थोड़ा Mediterranean region Alps की तरफ आते हैं, वो वाले winds है। Can you see the Mistral over here, the Tramontana, Levant, Bora, Grigel, है ना? ये सारे cold winds है। Okay, these are, अच्छा नहीं नजर आ रहा है? ये सारे अभी नजर आ रहे हैं? अच्छे से नजर आ रहे हैं ना? वी आर सेइंग मिस्ट्रल, लेवांट, ट्रामोंटाना, बोरा, ब्रिगेल, है ना? ये जो सारे विंड्स है, ये अलग अलग रीजन्स में ब्लो करेंगे, लेकिन कोल्ड विंड्स है जो उसी रीजन में मिलते हैं आपको। ओके, यू विल फाइंड द विंड्स इन दीज रीजन्स ओनली। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड्स इन द एल्प्स। ओके, तो ये मिस्ट्रल के साथ ही हम उसको ग्रुप कर देते हैं, विल जस्ट बंच इट अप टुगेदर। ओके, एंड इन सबको साथ में ग्रुप करेंगे, मिस्ट्रल, लेवांट, ट्रामोंटाना, बोरा, ब्रिगेल। ओके, these are those winds over here. And then of course you have, this is that set of winds, cold winds in the Rhone Valley. Okay, and the other set of winds is the Sirocco winds. Okay, अब ये winds को देख लीजिएगा, ये नीचे जो है दिस रीजन, हाँ, दैट इज गोइंग टू बी द मेडिटेरेनियन, दैट इज गोइंग टू बी द सहारा डेजर्ट। ओके, ये नीचे सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका का टॉप की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका। सो क्लियरली दिस इज द सहारा डेजर्ट। तो यू आर सीइंग ये विंड सहारा डेजर्ट से ब्लो करते हैं, दे फ्लो ओवर द मेडिटेरेनियन एंड दूसरी तरफ जाके बारिश देंगे। ओके, अब सहारा से जो विंड ब्लो करेगा वो डस्ट कैरी करेगा, हाँ, और इसके ऊपर जब ब्लो करेगा मेडिटेरेनियन के ऊपर, तो क्लियरली मॉइस्चर कैरी करेगा। अब ये मॉइस्चर एंड डस्ट मिला के वो ऐसे लाल कलर की बारिश देते हैं। तो फेमसली दिस रीजन, ये इटली वाला जो रीजन है या स्पेन का वगैरह जो कोस्ट है, दैट फेमसली गेट्स फ्लड रेन्स। ओके, तो सिरको, लेवेच, ये विंड का नाम दिख रहा है, लेवेच, चिली, हिबली, हमसिन, घरबी, हाँ, ये सारे हॉट विंड्स हो गए आपके। ओके, ये सारे वार्म विंड्स है जो यूजुअली डस्ट लेके जाते हैं और उधर जाके ब्लड रेन्स दे देते हैं दूसरी शोर की दूसरी तरफ। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, याद रहेगा, दूसरी बार पढ़ने से याद रहेगा। हाँ, take another break for 5 minutes. No, I don't want to start with the cyclones for no reason. या तो फिर questions discuss कर सकते हैं इसके ऊपर based. हाँ, let's try. साइक्लोन एंटी साइक्लोन्स को छोड़कर बाकी सब करेंगे। ये वाला बता सकते हैं आप मुझे? Mediterranean climate and monsoon climate of their unique climates to apparent movement of the sun, shifting of the pressure belts या local winds. Very good. Absolutely correct answer. You are talking of apparent movement of the sun, which will cause the belts to either move northward or shift southward. Okay, the entire set of belts is going to move northward or southward, and shifting of pressure belts. So ये दोनों होते हैं। Local winds कभी भी Mediterranean climates को influence नहीं कर रहे,
वो वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं. वेदर इज अ टेम्पररी कंडीशन, राइट? सो दे कैन इन्फ्लुएंस द वेदर, दे डू नॉट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट्स. क्लाइमेट्स आर परमानेंट fixtures, है ना? So they do not, local winds cannot influence climates. Okay, so we are going with only 1 and 2. ये वाला बताइए, which of the following is a warm wind? Mistral, Pampero, Brickfielder, Norte. Pampero, Pampero, absolutely. हाँ नहीं, क्या बोलते हो, कुछ भी बोलते हो आप. कौन सा? ब्रिकफील्डर इज अ वार्म विंड. रिमेम्बर, वो थोड़ा गर्म विंड होता है जो डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की तरफ से बाहर आता है. सो वी आर लुकिंग एट ब्रिकफील्डर इज अ वार्म विंड. मिस्ट्रल, पैम्पेरो, नॉटे और ऑल कोल्ड विंड्स. नॉटे कहाँ मिलता है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में. पैम्पेरो कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में, है ना? एंड मिस्ट्रल कहाँ मिलता है? एल्प्स में, रोन वैली. वी आर टॉकिंग ऑफ द एल्प्स. ओके. साइक्लोन्स नहीं कर सकते. ये वाला बताइए. रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s are westerlies. They are associated with westerlies. Okay. ये वाला बताइए. Which of the following is not a wind around the Mediterranean Sea? मेडिटेरेनियन सी के आसपास का नहीं है ऐसा कौन सा विंड है? हाँ. मिस्ट्रल मेडिटेरेनियन में मिलेगा, कोल्ड विंड है अल्प्स का. लेविच भी वही मिलेगा. लेविच तो थोड़ा सा गर्म विंड है जो सिरोको जैसा, ना? तो भी, है ना? लेविच देखिए, लेविच थोड़ा गर्म विंड है ना? मिस्ट्रल थोड़ा सा कोल्ड विंड है, तो मेडिटेरेनियन के आसपास का ही है. ओके. चिली, चिली भी थोड़ा वो गर्म विंड है ना? जो वो वहां से बाहर निकलता है. तो कौन सा विंड नहीं मिलता है? हर्मटान. डॉक्टर, डॉक्टर मेडिटेरेनियन में नहीं मिलता ना. डॉक्टर कहाँ मिलता है? सहारा से बाहर आते वक्त, है ना? वेस्ट अफ्रीका में मिलता है. सो मेडिटेरेनियन का विंड नहीं है. हर्मटान इज नॉट दैट विंड. ओके, वी आर गोइंग विद हर्मटान नॉट बीइंग दैट विंड. एंड ये वाला. एक सेकेंड ना. हाँ, अच्छा अच्छा, गॉट इट. Which of the following statements is correct? The intertropical convergence zone is also called as horse latitudes. The doldrums is a low pressure zone where trade winds converge. Around 50 to 30 degrees north and south, trade winds usually bring heavy precipitation on the western coast of continents. And jet streams intensify as the friction between as with the surface of Earth increases. B for Delhi, B for Bombay. Yes. Definitely yes. Okay. Let's analyze each statement. Intertropical zone को हॉर्स लैटिट्यूड्स बुलाते हैं क्या? नहीं. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस आईटीसीजी को क्या बुलाते हैं? डोल्टर्म्स बुलाते हैं. ओके, कॉल इट डोल्टर्म्स. वी डू नॉट कॉल इट हॉर्स लैटिट्यूड्स. Horse latitudes is subtropical heights. Okay, subtropical high pressure belt famously gets called as horse latitudes. Okay. What about the second statement is absolutely correct. Doldrums is a low pressure zone where trade winds converge. Okay, low pressure zone जहाँ trade winds, doldrums को ही ITCZ बुलाएंगे. We'll call the doldrums itself as ITCZ. Okay. Look at the third statement. Around 15 to 30 degrees north and south, trade winds usually bring heavy precipitation. No, trade winds are offshore. They are moving from the land towards the sea. And combined with those cold currents, they are going to form deserts over there. You are not going to get any sort of heavy precipitation between 15 to 30 degrees north and south. Okay? वो तो भूल ही जाओ possibility आप. Okay? And lastly, jet streams intensify as the friction with the surface of the earth increases. यार जेट स्ट्रीम्स का ओरिजिनल आइडिया ये है कि वो ट्रोपोपॉज में बहते हैं. ओके, दे फ्लो इन द ट्रोपोपॉज 9 to 16 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. कहाँ आप अर्थ से फ्रिक्शन करवाएंगे उसका ना? तो दिस स्टेटमेंट डजंट मेक एनी सेंस. तो फोर्थ स्टेटमेंट आल्सो डज नॉट इज नॉट लॉजिकल. So we'll go with the second statement that doldrums is a low pressure vector. Okay, low pressure zone. Okay.
These are all PYQs that I'm scrolling through. Huh? So look at the amount of PYQs you're getting for this chapter. Clearly too much. Good. This is not pressure. We are looking at only questions from pressure. Huh? Because we've done this earlier. Na? हमने सब पहले cover किया है. Stops. Which among the following local winds is not related to the Mediterranean Sea? Harmattan, Hamsin, Sirocco, Mistral. Harmattan. Harmattan is not related to the Mediterranean Sea. Okay. Option A. Where is the Coriolis effect the largest? At the equator, at the Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer, at the North Pole, or at 45 degrees latitude in each hemisphere? See, at the poles. You will get the Coriolis effect to be maximum at the poles and minimum at the equator. Okay? And then जैसे जैसे आप बीच में रहोगे वो Coriolis effect बढ़ता जाएगा. Okay? So clearly this is going to be your answer. The Coriolis effect is going to be largest at the poles. Okay? ह्यूमिडिटी से नहीं कर सकते. साइक्लोन से नहीं आ सकता. ये भी नहीं. heavy precipitation नहीं. 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 हाँ. Which one of the following is a cold local wind? Santa Ana, Chinook, Mistral, Lu. Mistral is a cold local wind. Santa Ana, Chinook, Lu are all famously warm winds. Okay. Shamal or Sham. I don't know how to pronounce that word now. थोड़ा वहाँ का word है. West Asia का word है. Shamal or Shamal, warm and dry wind, is a local wind found in East Africa, West Coast of Africa, Sahara of Africa और Mesopotamia. अब ये तो आपको नाम से पता चलना चाहिए कहाँ से आ रहा है ये वो. मेसोपोटामिया. इराक रीजन्स का विंड है ये. तो मेसोपोटामिया का विंड माना जाता है. इराक मीनिंग वी आर टॉकिंग ओवर हियर वेस्ट एशिया. ये इस रीजन में ब्लो करने वाला विंड होता है वो. एंड वेस्ट से आता है. भैया हैड गेस दिस फ्रॉम द नेम ऑफ द विंड कि वो वेस्टर्न विंड है क्या बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम द वेस्ट. ओके. ठीक है. इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल नहीं हो सकता है. पोलर फ्रंट नहीं हो सकता है. ये भी नहीं कहेंगे. ये वाला बताइए. You know these statements, ना? इस statement 1 and 2 correct है कि नहीं? And do they explain that? Reason है क्या वो उसका? हाँ? तो geostrophic wind blows above a height of 600 meters parallel to the isobars. Geostrophic wind is the horizontal wind velocity in which Coriolis force balances the horizontal pressure force. True? Both statements are true. And the second statement explain the first. Pretty much, ना? Otherwise वो parallel to isobars क्यों blow करेगा? It is flowing parallel to the isobars because the Coriolis force is getting adjusted completely by the pressure gradient force. वो completely balance out हो रहा है. Equal and opposite है वो. तो उसी वजह से वो wind parallel to the isobars flow करता है. And 600 meters ऊपर flow कर सकता है. We are saying सिर्फ surface friction को निकालना है ना इसमें से बाहर. Equation से बाहर. So वो तो आएगा. ये वाला बताइए. ये winds है, local winds है. अभी यार कैसे. हाँ अभी नजर आ रहा है. नजर आ रहे हैं आपको वो विंड्स? नहीं नजर आ रहे हैं. तो ऐसे ही मैच करके बताइए. यामो कहाँ का साउंड करता है? इकलौता एक इंग्लिश विंड है. उसको इंग्लिश कंट्री से मैच कीजिए. वहां से शुरू करते हैं. इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका. गुड. तो ब्लैक रोलर को उससे मैच करेंगे. हाँ इज दिस गुड? कम से कम. हाँ हबूब कहाँ का साउंड करता है? थोड़ा सा स्टेशन साउंड कर रहा है. तो वो कहाँ जाना चाहिए? सूडान, फ्रांस या जापान? सूडान. सूडान का होना चाहिए ना. गुड. अभी वो यामो कहाँ का साउंड करता है? जापान का. वेरी क्लियरली यामो इज अ विंड फ्रॉम जापान. एंड बिसे, बिसे इज गोइंग टू बी, वो बिसे भी नहीं बुलाएंगे उसको. बिस वगैरह कुछ बुला के क्लियर हो जाएगा वो. तो दैट इज गोइंग टू बी अ फ्रेंच थिंग. ओके ठीक है. इट्स अ फ्रेंच विंड.
Consider the पढ़ने को आ रहा है? Can you read this? Okay. Consider the following statements about the roaring 40s. These are strong westerly winds found in the oceans of the southern hemisphere. Okay. And second statement says the strong east to west air currents are caused by the combination of air being displaced from the equator towards the south pole and the earth's rotation and abundance of land masses to serve as wind breaks. तो रोरिंग 40s के बारे में बात कर रहे हैं. What do we know about the roaring 40s? That they are westerlies which blow in the southern hemisphere. Okay, ठीक है. And they blow between 40 degrees latitudes. वो वहां से 30 to 40 degrees से latitude में blow करेंगे. Okay, चलेगा. तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि there are strong westerly winds found in the oceans of the southern hemisphere. Yes, absolutely correct. Let's look at the second statement. Are they east to west air currents? अगर वो वेस्टर्लीज है तो वो किस डायरेक्शन से निकलने चाहिए? वेस्ट टू ईस्ट होने चाहिए. तो ये आपका पहला पिटफॉल. Okay, this is the first problem. They are caused by a combination of air being displaced from the equator towards the south pole, Earth's rotation, and abundance of land masses कहाँ से आए? There are not. आप southern hemisphere की बात करें ना? Southern hemisphere में abundance of land masses तो नहीं होगा. So this statement is completely wrong. Okay, ठीक है? So we'll just go with statement one. Look out for pitfalls. वो ऐसे छोटे-छोटे pitfalls दे देते हैं आपको. Consider the following statements. Doldrums is a low pressure area around the equator where prevailing winds are calm. And Chinook is, sorry, just a moment. Sorry, people. You guys were getting a respite, but I needed to. I was a little selfish, and I said, "No, I need to continue this lecture because if I start anticyclones and cyclones on a different note, you're going to forget everything that I taught you today. And if I do this 2-3 days later, you're not going to remember anything about pressure, and you're definitely not going to remember how cyclones, anticyclones work. So I'll finish this thing today, and then we may not see each other for a couple of days. That is fine, right? We are looking at doldrums as a low pressure area around the equator where the prevailing winds are calm. Yes. Yes, yes, no, yes, yes. Yes. Chinook is a hot dry wind that blows in winter and therefore raises the temperature in short time. No, no, Chinook को क्या बुलाएंगे? Snow eater. Remember Chinook is famously called as snow eater. So it is a hot and dry wind. वो usually katabatic wind होता है. Slope से नीचे आता है तो गर्म करेगा सब कुछ. It will heat up the area because it compresses the air, and that is why it will melt the snow, and that is why it raises the temperature in a short time. Okay, so both statements are correct. You're saying both statements are correct. Which of the following is a local wind that blows out from Siberia? साइबेरिया से निकलने वाला लोकल विंड कौन सा होता है? पोरा, पुर्गा, मिस्ट्रल या ब्लिजर्ड? नहीं पता, मैं बता देती हूँ. पुर्गा. रिमेम्बर हम इसको बुरान बुलाते हैं. वी यूज्ड टू कॉल द विंड बुरान. अगर वो थोड़ा सा एशिया में मिला तो, अगर रशिया पार्ट में मिला तो उसको पुर्गा बुलाएंगे, अगर अलास्का में मिला तो उसको बुर्गा बुलाएंगे, है ना? दैट इज द विंड. पोरा इज दैट कोल्ड विंड जो आपको एड्रियाटिक के अक्रॉस मिलता है. वो आल्प्स में ब्लो करने वाला, आल्प्स यूरोप रीजन का विंड है जो एड्रियाटिक के अक्रॉस आता है. दैट इज पोरा for you. Okay, Mistral is that cold wind in the Alps. वो तो नाम से वैसे पता चलता है. And blizzard कौन सा होता है? North easterly blizzard, the one that I said कि school colleges बंद हो जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में. That is going to be that wind. Okay, so अगर साइबेरिया का लोकल विंड चाहिए तो it is going to be the पुर्गा. Okay, और उसी को अलास्का में बुर्गा बुलाएंगे. Okay, और बर्गा बुलाएंगे. I'm not really sure here.
उसको क्या बुलाएंगे? हाँ जी, you want to go to another lecture? Sure, no problem. I'll continue this. This is usually on YouTube. If you want, you can check it out there. Okay, ठीक है. अभी साइक्लोन एंटी साइक्लोन कर ले. हाँ, it is just 4 pages, 4 to 5 pages, but I need to finish this. Okay, you are looking at, अभी हम जब एंटी साइक्लोन्स एंड साइक्लोन्स करते हैं तो वी आर लुकिंग एट वेदर सिस्टम्स, उनको वेदर सिस्टम्स बुलाते हैं. ओके, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं वो रोटेशनल विंड्स होते हैं. वंस अगेन इट इज अ विंड ओनली, but it moves in a circular fashion, either in a clockwise direction or an anti-clockwise direction, depending on which hemisphere you are in. Okay, so ये जो weather systems होते हैं, they are movements of warm and cold air across the globe. Okay, warm air, cold air जब across the globe move करती है तो उनको हम weather systems करके classify करते हैं. The one way of doing it is you can either call them low pressure systems or you can call them high pressure systems. Low pressure systems माने सेंटर में लो प्रेशर अगर होगा तो उसको लो प्रेशर सिस्टम्स बुलाएंगे. So if there is a low pressure in the center, you are essentially saying if there is a low pressure in the center and आजू बाजू high pressure है, if this is a high pressure region, तो wind कहाँ से कहाँ blow करेगा? सेंटर की तरफ blow करेगा. Okay, the wind will try to blow in the center. From the outside, the wind is going to blow towards the center. But now you are in the northern or southern hemisphere, and clearly there is going to be a Coriolis effect in play. So ये विंड सीधा अंदर आने के बजाय टर्न हो जाएगा. ओके, एंड ये जो टर्न होता है उसकी वजह से आपको वो गोल 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 विंड दिखाई देता है, एंड दैट इज व्हाट यू एसेंशियली कॉल एज अ साइक्लोन और एन एंटी साइक्लोन. ठीक है, चलेगा. सो वी आर एसेंशियली सेइंग लो प्रेशर सिस्टम्स जो होते हैं, साइक्लोन्स जो होते हैं. 12th standard, can you please stop talking amongst yourselves? If you are, I'm going to send you outside the classroom. Okay. Same for the girls. I have been ignoring you two at the last for a very long time. If you are not interested in sitting here, leave the classroom, go someplace else. There's no need to distract the class. Okay, so you are saying low pressure systems जो होते हैं वो बीच में लो प्रेशर होता है, बाजू बाजू साइड में हर जगह हाई प्रेशर होगा. विंड कहाँ से कहाँ आएगा? अंदर की तरफ आएगा. द विंड विल ब्लो इनवर्ड्स. ओके, एंड क्लियरली तभी जब ये विंड अंदर आएगा तो वो स्ट्रेट अंदर नहीं आएगा, वो कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में क्लियरली थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, and then you get the clockwise or anti-clockwise rotation depending on which hemisphere you are in. Okay, that is the low pressure system. तो अभी ये low pressure systems में you clearly से आपके दो types होते हैं. One आपका या तो temperate cyclones होगा, उसको depressions बुलाते हैं. Another word for it is also disturbances. Okay, another word for temperate cyclones is depressions and disturbances. Okay, ऐसे दोनों नाम से बुला सकते हैं. तो थोड़ा सा माइल्ड होगा तो उसको डिप्रेशन या डिस्टर्बेंसेस बुलाते हैं, अदरवाइज वी कॉल इट अ टेम्परेट साइक्लोन. ओके, सो ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये ऑब्वियसली मिड ऑल्टीट्यूड रीजन्स में डेवलप होते हैं. सो यू आर टॉकिंग एनीवेयर बिटवीन 35 to 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ. ओके, सो वो रीजन्स में जो डेवलप होंगे उनको टेम्परेट साइक्लोन्स बोलेंगे. एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में जो डेवलप होंगे बिटवीन 10 to 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बुलाएंगे. ओके, वी कॉल देम एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. तो वो ट्रॉपिकल रीजन्स में डेवलप होने वाले हैं. तो क्लियरली ये हो गए आपको लो प्रेशर सिस्टम्स व्हिच वी आर कॉलिंग एज साइक्लोन्स. ओके, The other thing is high pressure systems होते हैं. High pressure system माने सेंटर में हाई प्रेशर होगा, this will be high pressure. आजू बाजू सारा लो प्रेशर होगा. विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगा? अंदर से बाहर की तरफ. ओके, the wind will blow in an outward fashion. ओके, तो ये जो विंड बाहर फ्लो करेगा, once again it comes under the influence of the Coriolis effect and वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड टर्न करेगा. तो तभी once again क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा डिपेंडिंग ऑन विच हेमिस्फीयर यू आर इन. ओके, इसको बुलाते हैं एंटी साइक्लोन. ओके, एंटी cyclones are always high pressure systems, cyclones are always low pressure systems. Is this clear? Huh? अभी सबसे पहला वाला साइक्लोन स्टडी करते हैं. we'll study the mid latitude or the temperate cyclones first. Okay, also called as disturbances or depressions. Okay, so if you are looking at extra tropical cyclones, एक तो first of all आपको दो तीन चीजें समझना जरूरी है. One is an air mass. Okay, air mass माने ओए white shirt, हश बातें ना कीजिए. air mass जो होता है we say it white नहीं है. चलो यार, sorry, my bad. What do you call striped shirt? ठीक है, तो एयर मास जो है इट रिमेन्स ओवर अ, एयर मास जो होता है इट इज एयर व्हिच हैज रिमेन्ड ओवर अ प्लेस, वेदर अ कोल्ड एयर और अ कोल्ड प्लेस और अ ड्राई प्लेस और वेदर इट इज वार्म एंड मॉइस्ट. जैसे कोई समुद्र के ऊपर बहुत देर तक हवा ऐसे कैसे बैठी होगी
तो क्लियरली वो समुद्र की क्वालिटीज उठा लेती है एंड वो पूरी एयर वैसे बन जाती है. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज दिस एयर इज स्टेशनरी ओवर अ वार्म सी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन वो जो मॉइस्चरनेस है या वार्मथ है वो पूरी एयर में भर जाता है. ओके, एंड यू आर सेइंग थ्रू आउट दैट एंटायर लार्ज बॉडी ऑफ एयर यू विल हैव वेरी लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ओके, तो वो पूरा एयर मास, एक एंटायर ब्लॉक ऑफ एयर इज गोइंग टू बी कंप्लीटली will have very homogeneous humidity and temperature throughout. Okay, that is what you're saying. तो वो हमेशा नीचे के सरफेस पर जहां पर वो स्टेशनरी होता है वहां के प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है. इफ दिस इज स्टेशनरी ओवर सम आइस कैप, हाँ, या किसी आइस कैप या ग्लेशियर के ऊपर स्टेशनरी रहा, तो वहां पर कोल्डनेस उठा लेगा, कोल्डनेस एंड ड्राइनेस उठाएगा. ग्लेशियर ड्राई होता है ना, मॉइस्ट तो नहीं होते, तो ड्राई एंड कोल्ड एयर मास बन जाएगा वो. ओके, सो वी आर सेइंग दैट इज व्हाट एन एयर मास इज. इट इज व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजेनियस एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, it will acquire characteristics of that area, and that is that entire body of air which will have very little horizontal variation in temperature or humidity. Okay, अभी आपके एयर मासेस को ना इस तरह से क्लासिफाई करते हैं. आइदर दे कैन बी मैरीटाइम, मीनिंग मरीन हो सकते हैं, ओशन से डिराइव हो सकते हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं. अग्री, हाँ, लैंड के ऊपर डेवलप हो सकते हैं या ओशंस के ऊपर डेवलप हो सकते हैं. इफ दे डेवलपिंग ओवर ओशंस दे आर मैरीटाइम, इफ दे डेवलपिंग ओवर कॉन्टिनेंट्स दे विल बी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल. ओके, तीन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आपके पास. आइदर दे कैन बी ट्रॉपिकल, or they can be polar, or they can be arctic. Okay, तीन combinations हो सकते हैं. They can either come from a tropical region, they can come from a polar region, or they can come from the arctic region. Okay, either in the north or south. So now you are looking at this combination. तो आपके combinations कैसे बनेंगे? You will have a maritime tropical, you will have a maritime polar, and you will have a maritime arctic. ओके, ये रहे आपके सारे वार्म ओशंस वाले एयर मासेस, है ना. अगर ओशन वार्म ओशन होगा तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल बनेगा. ओके, अगर ओशन थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैरीटाइम पोलर बनेगा. एंड अगर ओशन एकदम ही आर्कटिक ओशन के ऊपर डेवलप हुआ कोई एयर मास होगा तो मैरीटाइम आर्कटिक बुलाएंगे उसको. ओके, सिमिलरली कॉन्टिनेंट का भी वही करेंगे. कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल होगा, कॉन्टिनेंट पोलर हो, कॉन्टिनेंटल पोलर होगा, एंड कॉन्टिनेंटल आर्कटिक होगा. हाँ, तो ऐसे 6 टाइप्स के एयर मासेस डेवलप हो सकते हैं. इज दिस गुड? तो ये मैच करने को आता है आपको. एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, मैच द फॉलोइंग एयर मासेस. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्टिनेंटल कौन सा. सो रिमेंबर दे कैन आइदर लैंड के ऊपर डेवलप होगा या सी के ऊपर डेवलप होगा, तो मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल होगा. एंड ट्रॉपिकल, पोलर या आर्कटिक रीजन्स में डेवलप हो सकते हैं. वैसे कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो. यू डन दिस प्रोबेबिलिटी एंड स्टफ, ये तो किया है ना हमने बहुत बार. ऐसे जोड़ी लगाते हो ना, वो HHTT वाला जोड़ी कैसे लगाते हो, हेड टेल्स वाला. क्यों, मुझे क्यों ज्यादा याद है प्रोबेबिलिटी आपसे? Is that so people? हाँ. Okay, here we are. So these are different types of air masses. Okay, now you understand the meaning of fronts. Fronts क्या होता है ना, जब एक warm air mass and you need contrasting qualities के air masses ने मिलना चाहिए. Okay, अगर same type के air masses मिलेंगे तो clearly fun, there is no fun. उसमें कोई contrast नहीं होगा, कुछ develop नहीं होगा, कोई cyclone नहीं बनेगा. You want contrasting kinds of air masses. Okay, तो hot air mass and warm cold air mass जब मिलते हैं तो उसका जो मिलने का point होता है, interface होता है या boundary होता है, that is called as a front. Okay, that gets called as a front. When you have a warm air mass and a cold air mass meeting, तो ये जो interface region होता है या boundary region होता है, that gets called as a front. Okay, and ये जो front बनने का process होता है, that gets called as frontogenesis. Okay, fronts का genesis या origin meaning frontogenesis. So you're looking at that process. Okay, now ये जो fronts होते हैं आपके, ये 4 types के हो सकते हैं. Stationary, meaning warm and air mass are simply standing there doing nothing. Okay, they're just meeting each other, nothing is happening. Not warm air is neither pushing, neither is cold air pushing, so simply they're just staying there stationary, कोई movement नहीं हो रहा है, उसको stationary बुलाएंगे. Okay, जैसे यहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है first picture, the warm air and cold air are simply standing by each other. Okay, now look at this pattern. दूसरा air mass जो होता है, that is a warm air mass. What happens in a warm air mass is, ये जो warm air होती है ना, it starts pushing inside the cold air. Okay, it starts pushing the cold air forward and वो थोड़ा सा आगे push करने लगती है. तो ये जो front बनता है when the warm air pushes into the cold air, that is called as a warm front. Okay, ठीक है. Similarly, when the cold air is pushing into the warm air, that we call as a cold front. Okay, ठीक है. So we have one stationary front where neither the warm nor the cold air is moving. We have a warm front where the warm air is clearly pushing at the cold air. And then we have the cold front where the cold air is clearly pushing at the warm air. Okay, ठीक है, ऐसा ये दो fronts बने. And last front जो होता है वो occluded front होता है. Occluded front वो होता है जब cold air completely warm air को envelop कर लेती है and उसको pack कर देती है. Okay, तो that is called as a occluded front. Occluded meaning blocked. Occluded arteries होते हैं, है ना, वो occluded और कहाँ use करते हैं हम लोग? Where else? Occluded meaning blocked.
Okay, just remember, occluded is बंद हो जाना या block हो जाना. That is called as occluded. So you're saying occluded fronts meaning वो warm, cold air will completely envelop the warm air and it will stop the movement of air ऊपर नीचे सब कुछ बंद हो जाएगा. तो उसको occluded front बुलाते हैं. Occluded fronts usually जब बन जाते हैं तो cyclone खत्म हो जाता है, dissipate हो जाता है. Okay, the cyclone will end after an occluded front is formed. Yeah. Could I repeat all the fronts? Sure. I'm saying that a warm and a cold air mass meet. The point at which, the boundary at which they meet is called as a front. Okay. Now that can be, the fronts can be of these types. Either it can be a stationary front, where neither the warm nor the cold air is moving into each other. So clearly the air is very stationary. So you call that as a stationary front. Okay. If the warm air decides to push forward into the cold air, that becomes a warm front. Okay. If the cold air decides to push into the warm air, that becomes a cold front. Okay. है ना, कोल्ड एयर अगर वार्म एयर को पुश कर रहा होगा अंदर की तरफ तो देन दैट इज अ कोल्ड फ्रंट. ओके, एंड लास्टली यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एन ऑक्लूडेड फ्रंट. दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्लूडेड फ्रंट. ओके, where the warm air is completely displaced and the cold air surrounds the warm air completely and there can be no movement of air possible. Okay, वो जो normally air, See the thing is, अगर आपको बारिश चाहिए तो आपको क्या चाहिए कि वार्म एयर ऊपर उठे, थोड़ा कोल हो जाए, ऊपर ऊपर जाके थोड़ा ठंडा हो जाए, कंडेंस कर जाए, है ना, तब जाके बारिश, क्लाउड्स बने और बारिश आ जाए. दैट इज द फंडा. अगर ये वार्म एयर ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं बचता है तो बारिश होने की कोई चांसेस नहीं बचते, कोई स्टॉर्म ही नहीं बनेगा इसके बाद. ओके, एंड हेंस व्हेन सच अ ऑक्लूडेड फ्रंट इज फॉर्म्ड, क्लियरली द साइक्लोन स्टॉप्स और डिसिपेट्स. वो खत्म हो जाता है साइक्लोन वहां पे, क्योंकि और बारिश होने के और एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी के कोई चांसेस नहीं बचते. ओके, ठीक है. सो दिस इज द ऑक्लूडेड फ्रंट. Remember, occluded fronts usually signify the end of the cyclone. Occluded fronts are formed at the end of the cyclone because after that the cyclone dissipates. Okay. Now let us see how this cyclone is formed. Okay. Development of a temperate cyclone is like this one. First of all, air masses of different air properties are going to meet. Okay. Warm air mass, cold air mass, they usually meet. Okay. एक front बनेगा, either a cold front, warm front, depending on which front is pushing where. Okay. So cold and warm fronts बनते हैं. Now what happens is, look at this. Look at this picture. This is a good picture to see. यू से नॉर्मली पहले एक स्टेशनरी फ्रंट बनता है, देन दोनों फ्रंट्स डेवलप होते हैं. जहां पर कहीं वार्म एयर अंदर पुश करता है कोल्ड एयर को, वो वार्म फ्रंट कहेंगे. When the cold air starts pushing into the warm air, we'll call that as a cold front. Okay, ठीक है. अब देखिए ये थोड़ा सा वी शेप हो गया है और ज्यादा वो दोनों फ्रंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. वार्म फ्रंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, कोल्ड फ्रंट भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. इस तरफ से यू कैन क्लियरली सी ना, वो इंटेंसिफाई हो गए हैं और ये ऐसा इन्वर्टेड वी शेप बन जाता है ना. दिस वेरी टिपिकल ऑफ अ शेप ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन. सो यू सी ये इस तरह का इन्वर्टेड शेप बन जाता है. देन धीरे धीरे क्या होता है ना, कोल्ड एयर का प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज कोल्डर, डेंसर, हेवियर. तो द अल्टीमेट एम, फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द कोल्ड एयर इज गोइंग टू बी कि वो वार्म एयर के कंप्लीटली नीचे स्लाइड कर जाए एंड वहीं पे उसी पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले एंड वार्म एयर को सीधा ऊपर भेज दे. ओके, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द कोल्ड एयर. सो दैट इज व्हाट द कोल्ड एयर इज ट्राइंग टू डू. कैन यू सी, इट इज ट्राइंग टू पुश द वार्म एयर अपवर्ड्स एंड वो पूरा नीचे वार्म एयर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है. तो ये उसका कंटिन्यूसली while the cyclone is being formed or intensified, that is the one life purpose of this cold air कि वो यही एक काम कर ले कि वो वार्म एयर को ऊपर भेजे और खुद नीचे सेटल हो जाए. ओके, तो दैट इज व्हाट द कोल्ड एयर इज ट्राइंग टू डू. एंड फाइनली उस चक्कर में जब वो उस कोल्ड एयर वार्म एयर को ऊपर भेज ही देता है तो वो जो फ्रंट बनता है दैट विल बी कॉल्ड एज एन ऑक्लूडेड फ्रंट. अब ये देखिए ये पूरी कोल्ड एयर बन गई एंड सिर्फ एक वार्म एयर का छोटा सा पॉकेट रह गया. राइट, फाइनली वो उस वार्म एयर को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर देता है. नीचे पूरी कोल्ड एयर हो जाती है, ऊपर पूरी वार्म एयर हो जाती है. एक बार यू गेट दिस लेयर ना, नीचे कोल्ड एयर ऊपर वार्म एयर, इसको हमारे यहाँ क्या बुलाते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन. राइट, वी कॉल दिस टेम्परेचर इन्वर्जन. Where there is a cold layer below and a warm layer above, can the cold air rise and form clouds? No, the possibility stops over here. है ना, इस कंडीशन को कहते हैं atmospheric stability. Okay, this is what we call as an atmospheric stability. Okay, we call this as an atmospheric stability. और जब ये atmospheric stability आ जाती है तो रेनफॉल का चांस जीरो हो जाता है. ओके, बिकॉज if the cold air cannot rise and it cannot become colder and condense and form clouds, how can it possibly rain? Right? तो अगर बारिश नहीं होगी तो storm कहाँ किसे कहलाएंगे. तो क्लियरली अब ये टेम्परेट साइक्लोन डिसिपेट हो जाएगा. वंस द ऑक्लूडेड फ्रंट इज फॉर्म, वो साइक्लोन डिसिप्लेट हो जाता है, वो कोल्डर कंप्लीटली एंड थोड़े दिनों में वो कोल्डर भी निकल जाएगी एंड ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन है वो रिप्लेस हो जाएगा. हमारा नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, नीचे वार्म एयर होती है, ऊपर कोल्ड एयर होता है. वो कंडीशन वापस आ जाएगा, नीचे वार्म एयर आ जाएगी, ऊपर की तरफ सारी कोल्ड एयर चली जाएगी एंड टेम्परेचर इन्वर्जन रिवर्स हो जाएगा एंड थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल. ओके, ठीक है. तो ये लास्ट कंडीशन इज व्हेन थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल. इज दिस गुड? समझा?
टेम्परेट साइक्लोन्स आसाम होते हैं। आपको टेम्परेट साइक्लोन्स पे यूजुअली क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत लॉजिकल होते हैं। आपको पूछते हैं फ्रंटोजेनेसिस कहाँ मिलता है, या फ्रंट्स कैसे बनते हैं, या फिर आपको ये पूछा जाता है कि पोलर फ्रंट थ्योरी कहाँ से रिलेटेड है। अब ये तो दिखाई दे रहा है, फ्रंट जब भी कहते हैं तो यू गोइंग टू टॉक ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, देयर इज नो अदर थिंग दैट विल डिस्कस फ्रंट्स ओवर हियर, ओके। प्रेशर में आपके पास इकलौता एक फ्रंट का टॉपिक होता है विच इज टेम्परेट साइक्लोन्स, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर नॉर्मली आस्क्ड टू यू. So please remember, if you're talking of a temperate cyclone, you say that first of all, a front is formed, then a cold front and a warm front will be formed. That aim or life goal of the cold air is going to be that it slides beneath the warm air and tries to occlude that front. तो वो एक जब वो occluded front बन जाएगा तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी आ जाता है, साइक्लोन डिसिपेट कर जाएगा, एंड देन थोड़े दिनों बाद कंडीशंस वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे कि वार्म एयर अबव, कोल्ड वार्म एयर बिलो, कोल्ड एयर अबव, ऐसा कंडीशन नॉर्मल आ जाएगा, एंड देन उसको वो दैट इज जस्ट नॉर्मल वेदर देन फॉर यू, ओके। ठीक है, इज दिस गुड? ओके, दोबारा रिपीट करूं, वापस बताऊं? नहीं, ये गुड, ओके। ये वाला जो साइक्लोन है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारे यहाँ डेवलप होता है। यू नो ना, अपने यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं तो दे कैन डेवलप बोथ इन द अरेबियन सी एज द बे ऑफ बंगाल। हमारे यहाँ जब साइक्लोन्स डेवलप होते हैं ना तो वो यूजुअली मॉनसून के ठीक पहले डेवलप होते हैं। आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि गर्मी चाहिए, बहुत गर्मी चाहिए, ओके। सो यू नीड द कंडीशंस टू बी रियली रियली हॉट, ओके। पानी चाहिए एंड गर्म पानी चाहिए। तो ये गर्म पानी या तो आपको अरेबियन सी में मिलेगा या बे ऑफ बंगाल में मिलेगा, एंड साल में दो बार ही बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है गर्मी। एक जब समर खत्म होने को एंड मानसून शुरू होने को है ना, तभी गर्मी बहुत होती है, एंड एक जब मानसून खत्म हो जाता है। जब मानसून खत्म हो जाता है तो हमारे पास एक अक्टूबर हीट का पीरियड होता है, रिमेंबर? हाँ, क्योंकि क्या हो जाता है ना, सिंस वो रेन्स हैव रिटर्न तो हमको वो गर्मी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, राइट। एंड क्योंकि वो एंड थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी लगता है हमको, राइट। तो वो जो पीरियड होता है ना अक्टूबर का, एंड ये यू नो एंड ऑफ मई, स्टार्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मानसून, प्री मानसून पीरियड, ये दोनों टाइम पे यहाँ पर यूजुअली बहुत सिवियर साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। वो हमारा साइक्लोन सीजन है इंडिया का, बिफोर द मानसून एंड आफ्टर द मानसून, दैट इज आवर साइक्लोन सीजन फॉर इंडिया, ओके। ठीक है, सो वी आर लुकिंग एट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में ट्रॉपिकली आ सकते हैं, इंडिया ट्रॉपिक्स में लाई करता है, तो हमारे यहाँ टेम्परेट साइक्लोन्स एक ही आता है, वो जो पंजाब की तरफ से आता है ना वो वाला साइक्लोन। रिमेंबर हमने हमने कहा था वो मेडिटेरेनियन में डेवलप होता है ऑल द वे, वो यू नो पर्शियन गल्फ के ऊपर या फिर कैस्पियन सी के ऊपर से वो अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए यहाँ पंजाब में आके बारिश देता है, कुल्लू वैली में स्नोफॉल देगा, है ना, वो वाला, दैट इज द टेम्परेट साइक्लोन दैट वी गेट इन इंडिया। But India में usually these two coasts are ravaged by tropical cyclones. Okay, we are looking at that. हम tropical cyclones देखते हैं। अब ये जो tropical cyclones होते हैं ना, ये low pressure systems होती है obviously. You are saying कि इनके ना पहले अलग अलग नाम देख लेते हैं. In different places they get called by different names. For example, if you are in the Indian Ocean, तो you simply call them as tropical cyclones. तो cyclone ही बुलाते हैं हम उसको. अगर चाइना जापान वाले रीजन में हो, इस रीजन में हो, साउथ चाइना सी वगैरह, यू आर लुकिंग एट दिस रीजन, साउथ चाइना सी वगैरह में होंगे आप या ईस्ट चाइना सी में, तो दे गेट कॉल्ड एज टाइफून्स, ओके, उनको टाइफून्स बुलाते हैं वहां पे, ऑलराइट। ये वाले रीजन में अगर वो डेवलप हो जाते हैं, इफ दे डेवलप इन दिस रीजन, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे इंडियन ओशन के रीजन में, तो क्लियरली यू कॉल देम एज द विली विलीज, ओके, उसको विली विलीज बुलाते हैं, हाँ। एंड यहाँ पर इस रीजन में जब डेवलप हो जाते हैं, ये यहाँ पे यूएसए कैरिबियन रीजन में, हाँ, इस रीजन में जब डेवलप हो जाएंगे तो उनको हरिकेन्स बुलाते हैं, ओके। हरिकेन्स इवन इन दिस पार्ट ऑफ द अटलांटिक पैसिफिक ओशन, बट यू आर कॉलिंग देम एज हरिकेन्स, ओके। दिस रीजन इज डेफिनेट, यहाँ पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होंगे उनको हरिकेन्स बुलाएंगे। तो ये नाम जरूरी होते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आता है आपको, सो प्लीज रिमेंबर देम। इसके अलावा ना यहाँ पर लैंड, अभी नाउ आई एम क्लियरली शोइंग यू सीज, है ना, मैं आपको समुद्र दिखा रही हूँ, सारे वार्म सीज दिखा रही हूँ जहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स तो कैसे ना, दे कैन डेवलप ओवर लैंड, दे कैन डेवलप ओवर सी, वो कहीं भी जहाँ पे कहीं एयर मासेस मिल जाएंगे वहां पे वो डेवलप हो जाएंगे, राइट। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि दे हैव टू डेवलप ओवर लैंड और दे हैव टू डेवलप ओवर सी, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशन है, उनको पानी चाहिए और गर्म पानी चाहिए, ओके। तो क्लियरली दे कैन ओनली डेवलप ओवर वार्म सीज। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लैंड के ऊपर नहीं डेवलप होते, वो समुद्र पे डेवलप होते हैं, वहां पे अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं, लैंड की तरफ मूव करते हैं, लैंडफॉल करने के 24 घंटे के अंदर वो यूजुअली डिसिपेट हो जाते हैं, ओके। अगर बहुत स्ट्रांग रहे वो, जैसे वो सुपर साइक्लोन था ओडिशा का, तो वो थोड़ी देर ज्यादा चलते हैं, अदरवाइज यूजुअली साइक्लोन्स विल डिसिपेट विद इन 24 आवर्स, खत्म हो जाते हैं। उनको पानी का सप्लाई चाहिए, कॉन्स्टेंटली पानी का सप्लाई चाहिए। अगर वो पानी का सप्लाई बंद हो जाएगा, जैसे वो लैंड पे आने के बंद हो जाता है, तो क्लियरली वो साइक्लोन खत्म हो जाता है, ओके। यू नीड टू रिमेंबर दैट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विल ऑलवेज बी डेवलप्ड ऑन द सी,
and they will move from the sea towards the land. Okay, ठीक है, fine. So this is what we are looking at. यहाँ पे आई वॉज टेलिंग यू कि एक स्पेशल टाइप का साइक्लोन, एक थंडरस्टॉर्मिक करंस होता है, लो प्रेशर सिस्टम ही होता है, उसको कहते हैं टॉर्नेडोज। ये यहाँ पे मिलते हैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स में, कॉन्टिनेंट पे डेवलप होते हैं, तो उसको आइडियली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन यूजुअली उसको ग्रुप किया जाता है साथ में, क्योंकि वो सिमिलर लैटिट्यूड्स में मिल जाते हैं ना आपको। तो टोर्नेडोज जो होते हैं वो यूजुअली थंडरस्टॉर्म्स टाइप के कंडीशंस होते हैं, families of tornadoes travel करते हैं, मतलब you are not saying of one single storm, okay, you are saying multiple storms होते हैं ऐसे जो साथ में ट्रैवल करते हैं, इसलिए इसको फैमिली ऑफ टोर्नेडोज बुलाते हैं। एंड बहुत फास्ट होते हैं एंड बहुत स्विफ्ट होते हैं, यूजुअली जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, बट दे कैन बी वेरी रिस्की वेदर कंडीशंस। ओके, तो वंस अगेन गवर्नमेंट एडवाइजरी देता है कि एवरीबडी स्टे क्लोज। आपने कभी देखा है, उनको बोला है कभी स्टॉर्म शेल्टर्स में रहने को, वो ना घर के नीचे एक ऐसा बंकर जैसा चीज बना लेते हैं, क्योंकि जब ये टोर्नेडोज चलते हैं तो स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो पूरा का पूरा घर उठा के लेके जा सकते हैं, तो आप घर में शेल्टर नहीं ले सकते, आपको वो नीचे जमीन के नीचे बंकर बना के वहां पे रह जाते हैं लोग, स्पेशली टोर्नेडो प्रोन रीजन्स में, एंड वहां पर यूजुअली प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। ओके, सो यू आर लुकिंग एट टोर्नेडोज व्हिच आर डेवलप्ड इन दिस प्लेस, कॉन्टिनेंटल यूएसए में जो मिलेंगे वो टोर्नेडोज बुलाए जाएंगे। ओके, ठीक है, ऑल राइट। नाउ लेट्स लुक एट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वी सेड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डेवलप होने का तरीका ये होता है जैसे नॉर्मल क्लाउड डेवलप होता है। हाउ डज अ नॉर्मल क्लाउड डेवलप? यू से देयर इज वार्म एयर, दैट वार्म एयर इज गोइंग टू राइज, इट एक्सपांड्स, इट कूल्स, अगर कूल होगा तो थोड़ी देर में कंडेंसेशन हो जाएगा, एंड कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश आती है ना। यही प्रोसेस अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाए एंड एक्सेलरेट हो जाए तो हम उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बुलाते हैं। वी आर लुकिंग एट द सेम हीट इंजन। ओके, वी आर लुकिंग एट अ हीट इंजन। हीट इंजन की बात मतलब कर रहे हैं, मतलब वी आर सेइंग कि what is an engine? It converts one energy into another, right? So you are saying ये heat energy को convert करता है into kinetic energy. Okay, that is what we are saying. In case of a tropical cyclone, when you say there's a thermal engine or a heat engine working, you're saying essentially that all that heat that you've gotten from the atmosphere is converted into kinetic energy, and that is the cyclone. Okay, essentially that is moving around. Okay, और उसके conditions of formation देख लीजिए tropical cyclone के, B से बड़ा सा sea चाहिए, बड़ा सा warm water body चाहिए, surface temperature should be greater than 27 degrees Celsius. Okay, ठीक है, तो you need warm seas over here. Coriolis force exist करना चाहिए, meaning clearly अभी आप वो 0 to 5 degrees north, 0 to 10 degrees north and 0 to 10 degrees south की बात नहीं कर रहे हो. Okay, you're outside that thing. Now you're talking of somewhere outside 10 degrees north and 10 degrees south. Okay, ठीक है. Vertical wind shear जो होता है वो बहुत कम होना चाहिए. Vertical wind shear माने, say suppose this is the surface. Okay, right? तो ये जो विंड्स होते हैं ना हल्के हल्के, जो सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ब्लो करते हैं, ऊपर की तरफ जो विंड्स ब्लो करते हैं उनको बुलाते हैं वर्टिकल विंड शेयर। मतलब ना विंड जब नॉर्मली चलता है, हाँ, तो यू नो ना दैट यहाँ पर यूजुअली एयर वार्म होती है, यहाँ पर एयर यूजुअली कोल्ड होती है। ओके, तो अगर एयर जितना ऊपर की तरफ ऑल्टीट्यूड में ट्रैवल करती है उसका डायरेक्शन एंड वेलोसिटी उतना जल्दी फटाफट बदल जाता है। जितना ज्यादा ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, उतना फटाक से प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज होता है एंड उतनी जल्दी उसका डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑल्टर हो जाएगा। उसको कहते हैं वर्टिकल विंड शेयर। आपको अगर वैसा वाला डेफिनेशन नहीं याद रखना है वर्टिकल विंड शेयर का, तो जस्ट रिमेंबर यू आर टॉकिंग ऑफ विंड्स दैट आर ब्लोइंग पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस इन द अपर एटमॉस्फेयर। ओके, अपर एटमॉस्फेयर में विंड जैसे ब्लो करेगा वो, तो आपको नहीं चाहिए कि यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हो। जो हमारी सिस्टम कैसे डेवलप हो रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जाने वाली सिस्टम डेवलप हो रही है, राइट? हाँ, तो आपको इसमें अभी कीड़े करने के लिए ये साइड साइड से विंड नहीं चाहिए। You don't require that wind. Okay, that is just going to spoil your chemistry. So you don't want these winds going from the side and spoiling all that. You want all these winds rising upward. अगर आपको ठीक से tropical cyclone develop करना है, तो you want all these winds to rise upward. You don't want those sideward wind and come and spoil that thing. Okay for you. ठीक है, तो vertical wind shear जो होता है वो थोड़ा कम चाहिए आपको. Okay, एंड मतलब नेग्लिजिबल होगा तो और भी अच्छी बात है। वी आर सेइंग कि जितना नेग्लिजिबल होगा उतना बेटर होता है वर्टिकल विंड शेयर। ओके, द सेकंड थिंग इज यू आर सेइंग कि प्री एग्जिस्टिंग, अगर प्री एग्जिस्टिंग वीक लो लाइन प्रेशर रीजन्स होंगे तो और भी अच्छा है। अब हमारे यहाँ यू रिमेंबर मॉनसून्स का हम कैसे बताते हैं, जैसे कि ये वाला रीजन जो होता है मॉनसून्स में, दिस पार्ट वी आर सेइंग दिस इंडियन ओशन, हाँ, ये हमेशा ही वीक लो प्रेशर एरिया हो जाता है। ओके, वीक प्रेशर या लो प्रेशर एरिया है क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत राइज करते हैं यहाँ पे, है ना, इसीलिए तो विंड्स निकलते हैं यहाँ से बाहर। सो यू आर सेइंग एसेंशियली ये वाला जो रीजन होता है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। सो ऐसे वाले जो वीक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर कंडीशंस होंगे वो चाहिए हमको। ओके, वी नीड दोस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टू डेवलप। And lastly, you're saying the upper divergence over sea level system. See, we are essentially saying कि अगर winds यहाँ नीचे से निकले, okay, if the winds start out from here, then they should diverge in the upper atmosphere. Okay, ऊपर की तरफ जाके diverge करना चाहिए winds से.
अगर विंड नीचे से ऊपर गया तो उधर ऊपर उसको दूर दूर जाना चाहिए ना उससे, तो वो डाइवर्ज होना चाहिए, अपर अपर डाइवर्ज, अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए। ओके, यू आर लुकिंग एट दीस प्री एग्जिस्टिंग प्रेशर कंडीशंस, प्री एग्जिस्टिंग वेदर कंडीशंस। ओके, समझा ये कंडीशंस? ओके, नाउ लेट्स लुक एट हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज डेवलप्ड। यू आर सेइंग ये हमेशा सीज के ऊपर ही डेवलप कर सकते हैं, ये सी के ऊपर डेवलप करता है, देन कोस्टल रीजन्स की तरफ मूव कर जाता है। ओके, ये बहुत अंदर तक नहीं आता है। पुणे को साइक्लोन्स का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, पुणे को रेन मिल सकती है साइक्लोन्स की, लेकिन पुणे को साइक्लोन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बॉम्बे इज इन श्योर थ्रेट, पूरा ईस्टर्न कोस्ट लाइन प्रॉपर थ्रेट ऑफ साइक्लोन्स। ओके, वेरी वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के तो बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाते हैं अपने यहाँ पे। ओके, सो वी आर सेइंग कि यूजुअली ये सीज पे डेवलप होते हैं, कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करते हैं। what you essentially get is very heavy rains, very violent winds, storm surges and stuff like that. Okay, I'll show you what a storm surge looks like. Hmm. This is a good picture of a storm surge. ये नजर आ रहा है समुंदर के अंदर जब स्टॉर्म्स जैसा डेवलप हो जाता है एंड वो पानी ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगता है, दैट इज एसेंशियली कॉल्ड एज अ स्टॉर्म सर्ज। ओके, वेरी रिस्की कंडीशंस फॉर कोस्टल रीजन्स बिकॉज दैट स्टॉर्म सर्ज कैन इजीली कम इन एंड इट कैन, एक छोटा सुनामी बन के वो आपके सिर पे गिर सकता है, तो दैट कैन बी अ वेरी रिस्की कंडीशन। ओके, ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट व्हेन वी टॉक ऑफ स्टॉर्म सर्जेस। तो वी आर सेइंग स्टॉर्म सर्जेस, हेवी रेनफॉल, वायलेंट विंड्स, ऐसे सब कुछ डेवलप हो सकता है। ओके, दिस इज ऑब्वियसली अ लो प्रेशर सेंटर, बीच में लो प्रेशर होता है एंड बाहर हाई प्रेशर रीजन होता है, तो क्लियरली क्या होगा, बाहर का विंड अंदर की तरफ आ जाता है, सेंटर की तरफ आ जाएगा। ओके, ऑल दैट विंड विल कम रशिंग इन, विल इट कम इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन? नो, इट विल टर्न। Okay, and how is that turn? The deflection is usually anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. Okay, ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, या तो फिर आप कोरियोलिस इफेक्ट देख लो ऐसे। अच्छा, ठीक है, मैं बाय हार्ट क्यों करते हैं आप लोग? ये लो प्रेशर रीजन है, हाँ, और ये बाहर का हाई प्रेशर रीजन। ओके, ठीक है, the wind will come in this direction, you are in the northern hemisphere. Okay, you are clearly in the northern hemisphere. ऐसा विंड किस डायरेक्शन में जाएगा? राइटवर्ड्स टर्न करेगा, मानी किस डायरेक्शन में टर्न करेगा? this direction, which is this direction, anti-clockwise. Okay, so in the northern hemisphere the direction is going to go anti-clockwise, in the southern hemisphere deflection left में होगा, so the direction is going to be clockwise. Okay, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। सो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्लियरली वो ऑल्टर हो जाएगा उसका डायरेक्शन। नाउ यू कम टू द हीट इंजन पार्ट। ओके, मैंने कहा कि ये जो पावर होती है इसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की, दैट इज बेसिकली अ हीट इंजन। ओके, व्हाट द हीट इंजन डज और थर्मल इंजन डज इज इट विल कन्वर्ट ऑल दैट एटमॉस्फेरिक हीट, वो जो भी हीट होगी उसको जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाउ दिस हैपेंस इज लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल से आपके पास नॉर्मल सी है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन होगा। ओके, क्लियरली ये जो वार्म एयर होगी वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, है ना, ऑल दिस वार्म एयर इज गोइंग टू राइज अप। ओके, ऊपर जाके कूल करेगी, एक्सपांड करेगी एंड देन कंडेंस कर जाएगी, एंड एक बार वो कंडेंस कर गई तो वो क्लाउड्स बनाएगा एंड बारिश देगा। ओके, वो कंडेंस जब करता है, व्हेन इट कंडेंसेस इनटू क्लाउड्स, तो एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड एज हीट रिलीज होती है बाय द जो जिसको हम बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ओके, है ना, वी कॉल दैट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। हीट ही है फाइनली जो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर को। वो हीट क्या करेगी, वो और ज्यादा ये प्रोसेस को इंटेंसिफाई करेगी, है ना, और ज्यादा इवेपोरेशन, और ज्यादा कंडेंसेशन, और ज्यादा कंडेंसेशन मीनिंग मोर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज रिलीज, which means all that heat is again going to be utilized for the same process, even more evaporation, even more condensation. You see now this is a proper cycle that you've gotten in, जहां पर clearly accelerate हो रहा है वो process, है ना, and बहुत intensify हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो बीच का सारा, ये जो नीचे की सारी हवा है वो सारी ऊपर की तरफ आ रही है ना, तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा वैक्यूम जैसा बच जाता है ना, थोड़ा सा वैक्यूमाइज स्पेस हो जाती है। अगर वैक्यूमाइज स्पेस होगी, लो प्रेशर रीजन डेवलप हो गया, तो आजू बाजू की हवा क्या करेगी, अंदर रश इन करने की कोशिश करेगी, है ना, ऑल द आउटसाइड एयर, सराउंडिंग एयर इज गोइंग टू ट्राई टू रश इन टू दैट प्लेस जहाँ पे हवा नहीं थी, है ना, ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन। एंड ये जो हवा ऊपर जाती है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, सारी एयर ऊपर की तरफ राइज करती है एंड थोड़ा सा इधर डाइवर्ज करेगी, है ना, साइड में डाइवर्ज कर जाएगी। ओके, तो कभी कभी क्या हो जाता है, बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग ओवर हियर, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर डेवलप होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेशर डेवलप होता है। ओके, एंड देन यहाँ पर ये जो बीच वाली एरिया रीजन होता है ना, जहाँ पे ऊपर वो सारी हवा डाइवर्ज करके जमा हो गई है, वहां से वो हवा धीरे धीरे नीचे डिसेंड करने लगती है, हल्की हल्की, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं आते, लेकिन हल्की हल्की हवा नीचे डिसेंड करने लगती है। ओके, तो ये जो किसी भी साइक्लोन में आपकी सेंट्रल जगह होती है ना,
दैट इज कॉल्ड एज द आई ऑफ द साइक्लोन. ओके, उसको आई ऑफ द साइक्लोन बुलाते हैं. एंड वहां पर काम डिसेंडिंग विंड्स होते हैं. वो जो सारे विंड्स ऊपर चले गए वो ऊपर जाके फैल गए. एंड देन वहां से थोड़ा सा विंड वैक्यूम था, इसलिए थोड़ा सा विंड नीचे की तरफ बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ आ गया. ओके, इट केप्ट कमिंग डाउन. वेरी हल्के हल्के विंड्स होते हैं. तो वो डिसेंडिंग विंड्स, काम डिसेंडिंग विंड्स इस रीजन में होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द आई ऑफ द साइक्लोन. ये पूरे तूफान में सबसे शांत जगह होती है. इट इज द क्वाइटेस्ट प्लेस इन द एंटायर स्टॉर्म, इन द एंटायर साइक्लोनिक स्टॉर्म. ये सबसे क्वाइट प्लेस होती है, रेनलेस होती है, यहाँ विंड्स नहीं चलते, यहाँ बारिश नहीं होती, बहुत क्वाइट जगह होती है. ओके, तो एंड क्लियरली अगर स्टॉर्म मूव करेगा तो आई उसके साथ साथ मूव करेगा, बट दिस इज यूजुअली द आई ऑफ द स्टॉर्म. ओके, देन आपके ये जो टेरिफिक विंड्स यहाँ पर ऊपर डेवलप हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ये हो रहा है, वो आपको यहाँ नजर आते हैं. ओके, यू कैन सी दिस पार्ट. हाँ, इसको बुलाते हैं आई वॉल. ओके, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज द आई वॉल. आई वॉल में आपके सारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, रेन बैंड्स बनते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं. तो जितनी भी सबसे तेज हवा इस बैंड में चलती है. द फास्टेस्ट विंड स्पीड इज फाउंड इन दिस बैंड. द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो फाउंड इन दिस बैंड. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द आई वॉल. बीच में आई है आपका, यू कैन क्लियरली सी ना, दिस इज द आई, जहां पर हवा थोड़ी सी डिसेंड कर रही है. ओके, एंड ये जो साइड से आई वॉल है, वहां से क्लियरली सारी बारिश बाहर जा रही है. ओके, ऑल दैट थिंग इज जस्ट एस्केपिंग आउटसाइड ओवर देयर. ओके, एंड ये ऊपर आपको आउटफ्लो दिख रहा है, क्लियरली अपर एयर डाइवर्जन हो रहा है, वो हवा ऊपर की तरफ डाइवर्ज कर रही है. ओके, ठीक है. नाउ यू आर सीइंग, सॉरी, सो यू आर सेइंग एसेंशियली कि जब तक आपका ये साइक्लोन अच्छे से डेवलप हो जाएगा, ओके, दिस विल इंटेंसिफाई, दिस विल डेवलप, एंड ऑल दिस हैपेंस ऑन द सी इटसेल्फ. जब वो एक बार ठीक से डेवलप हो गया तो देन इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द लैंड. ओके, अब वो लैंड की तरफ जब जाएगा तो जितनी देर के लिए वो समुद्र में रहता है तब तक ये कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाई होते रहता है साइक्लोन. ओके, इट विल कीप ऑन इंटेंसिफाइंग. इट्स अ हीट इंजन, सो इट्स गोइंग टू कन्वर्ट ऑल दैट हीट इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मूव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, when it acquires enough energy, it is going to start moving towards the coast. Okay, and when it moves towards the coast, तो जैसे जिस एरिया को जहां पर वो क्रॉस कर लेता है ना साइक्लोन, where the cyclone crosses the land, उस एरिया को बुलाते हैं लैंडफॉल. ओके, जहां पर साइक्लोन लैंड को या कोस्ट को क्रॉस करता है. से सपोज अब वो वी आर हियर, हाँ, we are saying we are here, the cyclone is developed somewhere over here, it starts moving over here. Okay, वो ऐसे मूव कर रहा है. देन इस एरिया को जब वो क्रॉस कर लेगा, कोस्ट पे जब वो जाएगा एंड बारिश देना शुरू कर देगा, तो उस मोमेंट को कहते हैं लैंडफॉल. ओके, तो आपको हमेशा बताते हैं व्हेन इट कम्स टू अ साइक्लोन, यू यूजुअली टोल्ड द लैंडफॉल विल बी एट सो एंड सच अ प्लेस, और एट सच एंड सच अ टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग द लैंडफॉल टू बी एट सच एंड सच अ टाइम. ओके, एक बार वो कोस्ट को क्रॉस कर गया तो विल इट गेट इनफ मॉइस्चर नाउ? नो. अगर उसका मॉइस्चर का सप्लाई कट हो गया तो कैसे वो इवेपोरेशन करेगा, कंडेंसेशन करेगा, फिर उसी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को यूटिलाइज करके और इवेपोरेशन करेगा? वो साइकिल उसकी टूट गई वहां पे. ओके, द लिंक इज ब्रोकन देयर. एक बार वो लिंक ब्रेक हो गई तो क्लियरली ये साइक्लोन अभी डिसिपेट कर जाएगा. अब जितनी हवा एंड एनर्जी उसके पास थी एंड बारिश थी वो देता रहेगा यहाँ पे, लेकिन उसके आगे वो टिक नहीं पाएगा, उसके आगे वो इंटेंसिफाई या डेवलप नहीं हो सकता, एंड देन वो डिसिपेट हो जाएगा. So it is not possible for the cyclone to survive on the coast for more than 24 hours. Usually कुछ घंटों में ही खत्म हो जाता है वो. Depending on वो कितना strong होगा वो उतनी देर वहां रहेगा. Okay, is this clear? हाँ, तो आप ये सारी चीजें याद रखिए when it comes to a tropical cyclone. Okay, very quickly, let's just go and differentiate between a tropical and a temperate cyclone. Okay, tropical cyclone, temperate cyclone में clearly क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है, राइट? फ्रंट्स बनते हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट. इसमें ऐसा कोई फ्रंट्स नहीं बनते हैं, ये प्रॉपर फनल शिफ्ट होता है, प्रॉपर ऐसा राउंड विंड होता है, एंड क्लियरली कोई फ्रंट्स नहीं बनते. ओके, टेम्परेट साइक्लोन्स यूजुअली उनका डायमीटर बहुत लार्ज होता है, एनीवेयर बिटवीन नॉर्मल, अगर मीन डायमीटर्स देखते हैं तो एनीवेयर बिटवीन 500 to 1 kilometers, 500 kilometers to 1000 kilometers. ओके, इतने बड़े बड़े होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स. यूजुअली दे कैन be as large as 1900 kilometers का डायमीटर, इतना बड़ा भी हो सकता है. ओके, whereas tropical cyclones usually छोटे छोटे होते हैं, 150 to 250 kilometers का डायमीटर is good enough. ओके, यूजुअली टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन जहां एयर मासेस मीट करेंगे, लैंड या सी कहीं भी ओरिजिनेट हो सकते हैं. Tropical cyclones can only originate over the sea. They cannot originate over land. वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उनके पास मॉइस्चर नहीं है डेवलप होने के लिए. ओके, ठीक है. टेम्परेट साइक्लोन्स का विंड वेलोसिटी जो होता है वो यूजुअली बहुत कम होता है, 40 to 60 किलोमीटर्स पर आवर इज कंसिडर्ड नॉर्मल, एंड दे आर आल्सो कंसिडर्ड लेस डिस्ट्रक्टिव. बहुत बारिश होती है, कंटिन्यूअस बारिश होती है, लेकिन इट इज नॉट लाइक ऐसे जान खतरे में नहीं है.
that kind of thing. Okay, but tropical cyclones में wind velocity is 120 kilometers per hour. It can go as high as 220 to 50 kilometers per hour. Okay, तो ये बहुत ज्यादा wind velocity हो गई, and this can be very very destructive. It will clear out everything in its path. It will destroy everything in its path. Okay, ठीक है. नॉर्मली ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, क्योंकि ये दीज आर पावर्ड बाय द वेस्टर्लीज, है ना. टेम्परेट साइक्लोन्स को कौन लेके जा रहा है एक एक जगह पे? वेस्टर्लीज लेके जा रहे हैं. वैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, बिकॉज ये इनको ट्रेड विंड्स पावर करते हैं, राइट. दे आर पावर्ड बाय द ट्रेड विंड्स. अग्री? ठीक है. So that is how this works. Temperate cyclones का जो एरिया है that is anywhere between 35 to 65 degrees north and south, and tropical cyclones are usually developed between 10 to 30 degrees north, 10 to 30 degrees south. Okay. Temperate cyclones का ऐसा inverted V shape है, देखा ना हमने, वो उल्टा V टाइप का शेप होता है. इनका elliptical shape होता है. Okay. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का. टेम्परेट साइक्लोन्स यूजुअली इरेगुलर होते हैं, ज्यादातर विंटर्स में पाए जाते हैं. हमारे यहाँ पे लेट समर्स में मिलते हैं पूरे दुनिया में. मैंने इंडिया का स्पेसिफिकली आपको बोला, मानसून के आने से ठीक पहले एंड मानसून खत्म होने के ठीक बाद में आपके साइक्लोन्स डेवलप होते हैं. ओके, ठीक है. एंड टेम्परेट साइक्लोन में यूजुअली प्रेशर ग्रेडियंट बहुत कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है. स्पीड किसका ज्यादा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का. तो क्लियरली प्रेशर ग्रेडियंट किसका ज्यादा होगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का. ओके, टेम्परेट साइक्लोन्स का प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है तो स्पीड भी कम होता है. ओके, एंड टेम्परेट साइक्लोन्स ज्यादा देर तक चलते हैं. वी आर सेइंग कि उनका डेवलप होके पूरा बारिश देके डिसिपेट होने का तक का जो पीरियड होता है वो ऑन एन एवरेज 2 to 3 वीक्स हो सकता है. whereas for the tropical cyclones it can be a week. एक वीक में वो डेवलप भी हो जाएंगे और एक दिन में कोस्ट पे आके खत्म भी हो जाएंगे. ओके, ठीक है. तो लुकिंग एट दैट. Okay, last topic of the day is going to be anticyclones. Anticyclones high pressure systems होते हैं. हाई प्रेशर सिस्टम माने यू आर सेइंग ये यहाँ पे बीच में हाई प्रेशर हो जाता है. ओके, आजू बाजू का जो पूरा एरिया है दैट्स गोइंग टू बी अ लो प्रेशर रीजन. विंड कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा. ओके, सो क्लियरली ये ऐसे आउटवर्ड जाने वाला विंड होता है, मतलब सरफेस पे डाइवर्ज करने वाला विंड होता है. अगर वो सरफेस पे डाइवर्ज करेगा तो ऊपर से क्या हो रहा है? ऑब्वियसली ऊपर से विंड नीचे डिसेंड कर रहा है, अदरवाइज वो हाई प्रेशर कैसे डेवलप होगा बीच में. ओके, सो यू आर क्लियरली सेइंग कि बीच में हाई प्रेशर होता है एंड वीक प्रेशर ग्रेडियंट होता है. द प्रेशर ग्रेडियंट इज वेरी वीक, तो ऑब्वियसली विंड स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है. अक्सर रेनलेस होते हैं एंटीसाइक्लोन्स, किसी एरिया पे आके बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा ग्लूमी सा डिप्रेसिंग सा लग सकता है, लेकिन बड़ी सारी बारिश वारिश हो रही है या बहुत तेजी से विंड या हवा चल रही है ऐसा कोई सीन नहीं होता है. ओके, इनका जो डायरेक्शन होता है वो साइक्लोन्स का ठीक उल्टा डायरेक्शन है. इट विल टेक अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, ये सब ट्रॉपिकल हाइट्स पे बहुत कॉमन हो जाते हैं, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में एब्सेंट है. साइक्लोन्स भी इक्वेटोरियल रीजन में एब्सेंट होते हैं एंड क्लियरली बाहर आपको मिल जाएंगे. ओके, तो एंटी साइक्लोन्स आपको हर जगह पे मिल सकते हैं, यूजुअली सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, बिकॉज सब ट्रॉपिकल रीजन इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज ओरिजिनली अ हाई प्रेशर बेल्ट, राइट. तो वहां पे एंटी साइक्लोन से डेवलप होना आसान रहता है. उनका साइज बहुत बड़ा होता है. मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट नोन एंटीसाइक्लोन इज 9000 किलोमीटर्स. इतना बड़े एरिया पे वो जाके एंटीसाइक्लोन बैठ सकता है. ओके, यूजुअली फेयर वेदर कंडीशंस होते हैं, कभी कभी बारिश भी हो सकती है, लेकिन अभी क्लियरली इफ यू सी इफ द विंड इज डिसेंडिंग फ्रॉम अबव, हाँ, अगर ऊपर से विंड डिसेंड हो रहा है और इसलिए बीच में ये हाई प्रेशर रीजन बन रहा है, तो क्लियरली अगर ऊपर से विंड डिसेंड हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको बारिश के लिए क्या चाहिए हमको कि विंड नीचे से ऊपर जाए, है ना, ये चाहिए बारिश बनने के लिए. ऊपर से आने वाला विंड कभी बारिश नहीं दे सकता है. सो ये मोस्टली रेनलेस होते हैं. ओके, यूजुअली रेनलेस होते हैं. कोई बहुत स्पेशल कंडीशंस हो जाए तब जाके आपको कभी कभी बारिश मिल सकती है, लेकिन मोस्टली रेनलेस. ओके, गुड. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. अभी यहाँ के सारे साइक्लोन्स के सिस्टम्स. Which of the following is not a feature of temperate cyclones? Clear frontal system, originate over both land and sea, higher pressure gradient than tropical cyclones, or large diameter, hence cover large areas. कौन सा नहीं नॉर्मल लग रहा है टॉपिक टेम्परेट साइक्लोन्स के लिए? विच इज एन इनकरेक्ट कंडीशन फॉर टेम्परेट साइक्लोन्स? फॉर दिल्ली? हाँ, इसका क्या करेंगे? क्या उसका प्रेशर ग्रेडियंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से ज्यादा होता है? विंड स्पीड किस में ज्यादा होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में. तो प्रेशर ग्रेडियंट किस में ज्यादा होना चाहिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा ज्यादा होगा. टेम्परेट साइक्लोन्स का प्रेशर ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी अ लिटिल लेस. ओके, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर.
टेम्परेट साइक्लोन्स में क्लियरली एक फ्रंटल सिस्टम होता है. देयर इज ऑलवेज अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम. देयर इज अ कोल्ड फ्रंट, देयर इज अ वार्म फ्रंट, एंड क्लियरली वो फ्रंटल सिस्टम होता है. वो दोनों पे ओरिजिनेट कर सकते हैं. दे कैन ओरिजिनेट बोथ ओवर लैंड एंड सी, लेकिन उनका प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से कम ही होगा. ओके, द प्रेशर ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी लेसर देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड द डायमीटर इज क्लियरली लार्जर देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. तो वो बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, है ना. वी जस्ट डिस्कस्ड है. वो 1000 किलोमीटर क्या 1900 किलोमीटर तक का भी हो सकता है. ओके, इट कैन गो एज क्लोज टू 2000 किलोमीटर्स, as large as 2000 kilometers. Clear? Boys, can you please stop talking? Usually ना टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं उसमें निम्बोस्ट्रैटस क्लाउड्स बनते हैं, ये वाले. टेम्परेट साइक्लोन्स आर फेमसली एसोसिएटेड विद क्यूमुलस क्लाउड्स और निम्बोस्ट्रैटस क्लाउड्स. इन क्लाउड्स की आदत होती है कि वो कंटिन्यूस रेनफॉल देते हैं, राइट. कंटिन्यूस रेनफॉल, स्नो या स्लीट देने की आदत होती है निम्बोस्ट्रैटस की. whereas अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हो तो वो हाई वर्टिकल एक्सटेंट के वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स नहीं होते, वो वाले बना लेते हैं. ओके, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड निम्बोस्ट्रैटस आर एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन्स. सॉरी, ये वाला बताइए. Which of the following statements about tropical and temperate cyclones is incorrect? Tropical cyclones move only from the sea towards the land. Temperate cyclones move only from land towards the sea. Tropical cyclones have closely spaced isobars than temperate cyclones. And temperate cyclones have a clear frontal system, which tropical cyclones do not possess. चलो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जामिन करते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड. हाँ, वो सी पे ही डेवलप हो सकते हैं और वो लैंड की तरफ ही मूव करते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट सही है. लेट्स गो विद दैट. ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. टेम्परेट साइक्लोन्स मूव ओनली फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी. नहीं, जरूरी नहीं है. वो कहीं से भी कहीं जा सकते हैं. वो लैंड पे डेवलप हो सकते हैं, सी पे डेवलप हो सकते हैं, कहीं से कहीं जा सकते हैं. ओके, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स. व्हाट डू क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स मीन? कि प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है ना. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में तो ज्यादा होता है प्रेशर ग्रेडियंट देन टेम्परेट साइक्लोन्स. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. ओके, एंड टेम्परेट साइक्लोन्स हैव अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम व्हिच ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट possess. ये स्टेटमेंट भी सही है. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम. ये बी स्टेटमेंट रॉन्ग है. ओके, हाँ जी, इसको मैच करके बताइए. Billy Willies, typhoons and hurricanes. Your options are Indian Ocean, Caribbean, East China Sea, and Timor. टिमोर एंड इंडियन ओशन बोला. अच्छा, ठीक है. नहीं यार, विली विली इज आइडियली. अच्छा, आप मैच कीजिए फिर हम करते हैं. बोलिए, विली विली को कहाँ जाएंगे? कौन सा? डी ऑप्शन बोल रहे हैं? डी फॉर दिल्ली बोल रहे हैं आप? सी, 3 बी. हाँ, यू आर राइट. 2 सी आएगा, 3 बी आएगा. अब आप बोल रहे हो कि वो विली विली टिमोर सी में डेवलप होते हैं. हाँ हाँ, बराबर है. लेकिन आप कह रहे हो कि वो टिमोर सी में डेवलप होते हैं, इंडियन ओशन में नहीं. बट टिमोर सी किसका पार्ट है आइडियली? टेक्निकली वो इंडियन ओशन का बोलना चाहिए उन्होंने. मैंने इसीलिए वो चेक किया. आई शो यू. वेट, अब बनाया भी मैंने ही था क्वेश्चन, तो हाउ कुड आई. अरे यार, नहीं यहाँ पे नहीं चेक किया. कहाँ चेक किया मैंने? कहाँ चेक करते, कोई बात नहीं. They can develop in both places. We'll go with Timor Sea. क्योंकि उनके हिसाब से टिमोर सी या अराफुरा सी में जो डेवलप होते हैं वो किम्बर्ली या पिलबारा को अफेक्ट करते हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया. whereas इंडियन ओशन में जो डेवलप हो रहे हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, माडागास्कर को अफेक्ट कर रहे हैं. तो विल गो विद टिमोर्स. हाँ, विल गो विद टिमोर सी. डी के साथ जाएगा.
Willy with Timor-Sea, हाँ, we'll go with that. ठीक है. Moving forward. ये हो गया ना? ठीक है. अभी मुझे सिर्फ साइक्लोन्स देखने हैं. चलो जी. Question 121. Consider the following conditions favorable for the formation and intensification of tropical storms. One is presence of Coriolis force. Second is upper divergence above the sea level system. And third is high variations in the vertical wind speed. बोलिए. अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट चाहिए तो डू यू नीड कोरियोलिस फोर्स? यस. इट इज वेरी नेसेसरी. गोल गोल कैसे घूमेगा? हाउ विल इट गो राउंड एंड राउंड, राइट? तो प्रेजेंस ऑफ ये चाहिए. अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम चाहिए. यस. तो रिक्वायर ना कि वो विंड्स ऊपर राइज करे एंड देन डाइवर्ज करे ऊपर, तो वो डाइवर्ज तो होनी चाहिए. डू यू नीड हाई वर्टिकल विंड शीयर? नो. नो. नो, ये नहीं चाहिए. तो विल ओनली गो विद 1 and 2. ओके, दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर. ये हो गया. ये वाला मैच. हरिकेन्स कहाँ के हैं? हरिकेन्स कहाँ जाने चाहिए? यूएसए. हाँ जी, गुड. विली ऑस्ट्रेलिया. टाइफून्स चाइना. ये बैंगलो फिलीपींस. ओके, तो व्हाट शुड वी गो फॉर? 4 3 2 1. क्या? 4 3 2 1. ए, दैट्स गोइंग टू बी आवर आंसर. बता दो. Consider the following statements regarding fronts. आपको बताने इसमें से correct statements कौन से? Okay, first statement says the movement of a front causes a slow change in weather in the area over which it moves. Secondly, cold fronts are associated with thunderstorms. And the third statement says warm front is the boundary between an advancing mass of warm air where it is overriding and rising above a mass of colder air. Okay, तो इसमें से कौन सी statement सही है? अगर यार guys, can you please stop talking? The movement of a front causes a slow change in weather in the area over which it moves. Yes. अगर कोई front आ गया, front आ रहा है मतलब clearly you are saying there is a cold air pushing or a warm air pushing into the other kind of air. Okay. तो clearly अगर वो air आपके सिर पे उसके बैठ गया है तो वैसा आप फील भी करेंगे ना, वो weather को change करेगा, local weather को change करेगा. तो ये तो सही है. Okay. Are cold fronts associated with thunderstorms? Cold fronts thunderstorms के साथ associate कर सकते हैं क्या आप? हाँ, करने चाहिए आपके. Because it will act as a dense wedge. वो rapidly warm air को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा है ना. What the cold air does is, वो अगर cold front बन रहा है तो what the cold front is doing, वो warm air को push कर रहा है. कहाँ? ऊपर की तरफ. तो अगर warm air को rapidly ऊपर की तरफ push किया तो क्या बनता है? Hailstones बनते हैं. Remember, अगर बहुत ऊपर तो बड़े बड़े raindrops बनते हैं या hailstones बनते हैं. तो clearly वो cold front जो होता है वो thunderstorms के साथ associate होता है. Okay, it is definitely associated with thunderstorms. हाँ क्या question? हाँ. And warm front is the boundary between an advancing mass of warm air where it is overriding and rising above a mass of colder air. हाँ. We'll go with all three. ये हो गया. ह्यूमिडिटी नहीं करेंगे. ये वाला बताइए. Which of the following statements regarding cyclones and anticyclones is are correct? In the northern hemisphere, cyclones rotate counterclockwise and anticyclones rotate clockwise. ये सही है. Northern hemisphere में साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं एंड साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे एंड एंटी साइक्लोन्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. ये सही है ना? दिस इज वेरी करेक्ट. Cyclones are often associated with cloudy or rainy weather, whereas anticyclones are often associated with fair weather. Yes, this statement is also good. In the southern hemisphere,
the cyclonic spiral will be clockwise because the Coriolis force acts to the left. है ना? सही है. तो साइक्लोन्स का जो स्पाइरल है वो थोड़ा सा क्लॉकवाइज हो जाता है बिकॉज कोरियोलिस फोर्स तो आपका लेफ्ट को ही एक्ट करता है. विल गो विद ऑल थ्री बाबा. ऑल थ्री आर करेक्ट. ये वाला बताइए. These storms, once again tropical cyclones का क्वेश्चन है. These storms develop during the summer and autumn in every tropical ocean except the South Atlantic and the Eastern South Pacific Oceans. एक सेकंड ना, कहाँ गया South Atlantic? ये रहा South Atlantic Ocean and Eastern South Coastal Pacific Oceans. ये वाला यहाँ और यहाँ छोड़कर आपके सारे स्टॉर्म्स डेवलप होते हैं, ऐसा उनका कहना है. ठीक है, होते हैं. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट अकर इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशंस आर कॉल्ड एज टाइफून्स. नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक. यू आर सेइंग ये रहा नॉर्थ अटलांटिक, हाँ, ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक. ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक रीजन में डेवलप होने वाले को टाइफून्स बोलेंगे. नहीं, उनको टाइफून्स नहीं बुलाते. यहाँ पे जो डेवलप होते हैं उनको क्या बुलाएंगे? हरिकेन्स बुलाते हैं. टाइफून्स तो नहीं बुलाएंगे हम उसको. किसी भी हाल में टाइफून्स नहीं बुलाएंगे. तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत होगा. एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट अकर इन द इंडियन एंड साउथ पैसिफिक ओशन आर कॉल्ड एज साइक्लोन्स. यू आर सेइंग यहाँ इंडियन ओशन में एंड साउथ पैसिफिक ओशन में जो ये साइक्लोन्स डेवलप होंगे उनको साइक्लोन्स बुलाते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होंगे साइक्लोन्स बुलाएंगे ना. इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक में साइक्लोन्स बुलाएंगे. तो 1 and 3 सही होगा ना. ओके, we'll say 1 and 3 is correct. We can't go with the second one. ये वाला बताइए. Consider the following statements about anticyclones. Anticyclones are high pressure systems. Air in the high pressure systems are anticyclones. हाँ, बिल्कुल है. Okay. Air in the center of the system must be subsiding. Yes, नीचे आने वाली हवा होती है. ऐसे high pressure में यहाँ पर नीचे हवा आती है. Okay. तो वो subsiding हवा होती है. Anticyclones are characterized by converging winds. हाँ, winds नहीं, एंटीसाइक्लोन्स डाइवर्जिंग विंड्स. सरफेस विंड्स कैसे डाइवर्ज कर रहे हैं ना, तो एंटीसाइक्लोन्स आर डाइवर्जिंग विंड्स. अगर हाई प्रेशर सिस्टम है, बीच में हाई प्रेशर है, बाजू में लो प्रेशर है, तो हवा कहाँ से कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है ना, डाइवर्ज कर रही है हवा. तो वो कन्वर्जिंग नहीं, वो डाइवर्जिंग विंड्स है. तो इसमें से दो स्टेटमेंट सही है. क्लाउड बर्स्ट कर लिया है हमने. ये वाला बताइए. निसर्ग गति, निवार, टॉक्टे एंड यास, ये किसके नाम है? न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट, टूरिस्ट प्लेसेस, वेदर स्टेशन या साइक्लोन्स. एक ही तो चीज है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, साइक्लोन्स. दिस निसर्ग गति, निवार, टॉक्टे, ये सारे यास, ये सारे अलग अलग जिस देश से निकलता है उसका टाइम होता है उसको नेम करने का. तो हम उस साइक्लोन को वैसा नाम देते हैं. तो वी आर कॉलिंग इट साइक्लोन्स है. ये सारे के सारे साइक्लोन्स है. ये वाला बताइए. Which of the following is not true with reference to an air mass? Air mass typically forms either in a tropical or a polar region. हाँ, बन सकता है ना. एयर मास कहाँ बनेगा? या तो हॉट जगह पे या वार्म जगह पे. तो दिस इज करेक्ट. एयर मास डेवलप्स ऑन कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशंस. तो ये भी सही है. एयर मास डेवलप्स इन अ साइक्लोनिक कंडीशन. No, air mass doesn't develop in a cyclonic condition. Air masses lead to the development of cyclone. They do not develop in a cyclonic condition. Okay? And air mass changes the weather conditions. ये सही है. तो option C is the answer here. Polar front theory काहे के साथ associated है? Which one of the following can be said to be essentially related to the polar front theory? Anticyclones, tropical cyclones, temperate cyclones, intertropical convergence. Fronts कौन से cyclone में बनते हैं? Temperate. So we are going with temperate cyclones. Okay. It's a polar front theory. माने poles वो this फेरल सेल एंड पोलर सेल के का जो इंटरफेस है वहां पे जो साइक्लोन्स बनेंगे उससे रिलेटेड थियरी है वो पोलर फ्रंट थियरी. ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी अबाउट टेम्परेट साइक्लोन्स. ये वाला कंडीशंस बताइए. Which of the following, consider the following characteristics of a tropical cyclone? Warm sea temperature greater than 26 degrees Celsius. Yes. Okay. ये तो है. High relative humidity of atmosphere is greater than 700 meters. हाँ.
वो भी चाहिए होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई नहीं होगी तो कंडेंसेशन कैसे होगा ना, कंडेंसेशन तो होना चाहिए, बिना कंडेंसेशन के हमको वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन नहीं मिलेगा। एंड एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, ये तीनों कंडीशंस जो है ये कौन सी स्टेज के लिए चाहिए आपको, यू आर आस्किंग ये कौन सी स्टेज है साइक्लोन की, फॉर्मुलेशन एंड इनिशियल स्टेज, मॉडिफिकेशन स्टेज, फुल मैच्योरिटी या डीके, ये बनने के कंडीशन है ना, ये फॉर्मेशन के कंडीशन है सारे, दीज आर ऑल कंडीशंस जब वो साइक्लोन अच्छे से बन रहा है। ओके, सो फॉर्मेशन एंड इनिशियल स्टेज की कंडीशन है। ये आइसोथर्म्स है ना, हाँ, सो वी डोंट नीड टू डिस्कस दैट। ये वाला बताइए, मैंने कहा था ना मैच करने को आता है फ्रंट्स एयर मासेस को, वो एयर मासेस मैच करके बताइए। वी आर सेइंग मैरीटाइम इक्वेटोरियल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एंड कॉन्टिनेंटल पोलर। अब इसमें से आपको पेयर्स बताना है। मैरीटाइम इक्वेटोरियल मतलब वार्म ओशंस इन द इक्वेटोरियल रीजन, हाँ वो सही है ना, वहीं के होंगे ये। मैरीटाइम पोलर मतलब वार्म ओशंस इन द ट्रॉपिकल जोन, नो। मैरीटाइम पोलर बोला है, पोलर माने कोल्ड होना चाहिए, ट्रॉपिकल रीजन पे कैसे जा सकता है ना। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल इज गोइंग टू बी लेस वार्म ओशंस, नो, ओशंस के ऊपर नहीं डेवलप होगा ना कॉन्टिनेंटल, सो once again this is wrong. And continental polar is again moist oceans, no. So this is your answer, A. That is going to be a correct pair. And we are done. Thank you very